Okay, so welcome to the यकीन series and पूरा रिविजन जो दिए हुए 3 चैप्टर्स का है अच्छे से करते हैं एंड लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें आपको आती है. लेट्स हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नाउ बिकॉज एग्जाम के हिसाब से यू नीड टू हैव दैट. ठीक है. सो कीप ऑल योर नोट्स मॉड्यूल्स वगैरह रेडी एंड लेट्स सी वन आफ्टर द अदर. एक एक करके क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेता हूं तो यू विल हैव अ फास्टर एज. ठीक है. Let's understand. What is the regulation that governs the transfer of issue of security? Anyone? What is the regulation that governs the transfer of issue of foreign security by a person resident in India? कौन सा था? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sure. So regulation is Reserve Bank has made that foreign exchange management transfer of issue of securities regulation will govern that. ठीक है. तो याद रखना व्हाट इज द रेगुलेशन दैट गवर्न्स दिस. तो आरबीआई के हिसाब से रिजर्व बैंक हैज मेड दैट फॉरेन एक्सचेंज management transfer and issue of securities will govern that. Okay, how does foreign exchange management regulate acquisition of creation of assets outside India? How does foreign exchange management act regulate the acquisition and creation outside India? Through RBI, through FEMA? Anyone? No? Chalo, let's see. The Act prohibits a person from entering into any kind of financial transaction in India as a consideration for or in association with the acquisition of creation of any right to acquire the assets outside India except otherwise stated in the Act. तो मतलब पहले भी आपको बताया था रेगुलेशन यानी सेक्शन 3 के हिसाब से आप इंडिया के बाहर कोई भी एसेट्स कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते बिना परमिशन के. याद आया? FEMA में clearly लिखा हुआ है. So if you cannot acquire a property outside India, the Act actually prohibits of entering into any kind of transaction which is there outside India without the permission of that. याद आया? Okay, fine. What does Section 3 of Foreign Exchange Management Act prohibits? What does Section 3 of Foreign Exchange Management Act prohibits? What does Section 3 of Management Act prohibits? Anyone? ओके. कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर कोई भी एसेट्स लेगा उस चीज को. तो सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन अदर देन द ऑथराइज्ड डीलर और ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम डीलिंग इन ट्रांसफरिंग द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी और मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट टू. ओके. Making any kind of payment to for credit of any person resident outside India or receiving any payment by the order on behalf of any person resident outside India except as provided in the Act rules. तो ये भी समझा चुका हूँ. याद रखना. क्या याद रखना? सेक्शन 3 क्लियरली बोलता है यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट एज पर फेमा एक्ट एंड रूल्स. You cannot enter into any transaction outside India except as per FEMA Act and rules. Got it? Clear? Then, what do you mean by the term financial transaction as per Section 3 Clause D of the Foreign Exchange Management Act? Anyone remembering what is the financial transaction? Financial transaction. Okay. So what are the financial transaction? A financial transaction refers to making a payment to or credit of any person, receiving any payment for and on behalf of a person, drawing, issuing, negotiating any bills of exchange, promissory note or any security. So any kind of transaction जहां पे आपको payments make करनी पड़ती है in terms of or in behalf of any person who is drawing, issuing, negotiating any bills of exchange or security, that is a financial transaction. Okay, so ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल कवर कर रहा है. क्लियर? आई होप नाउ यू आर रियलाइजिंग कंसेप्ट्स कहां पे वीक है. Okay, so what is the financial transaction? It refers to any kind of payment to or the credit of any person which is receiving any payment for and on behalf of any person drawing or issuing or negotiating bills of exchange or promissory note. Clear? Then, acha, what is the jurisdiction of special director appeals? What is the jurisdiction of special director appeals? ये तो आना चाहिए.
What are the jurisdiction of special director appeals? Okay, the central government shall specify the matter to be placed before the special director appeals to be exercising the jurisdiction. मैंने आपको पहले भी बताया था मैटर अप टू 75 lakhs goes to special director appeals and it is decided by the central government. It is decided by the central government. Okay. Then describe the role of special director appeals in context of foreign exchange management. Special director appeal करता क्या है? क्या करता है स्पेशल डायरेक्टर अपील्स? अरे सर वो अपील सुनता है. Okay, fine. So special director appeal is an officer who is appointed by the central government to hear the appeals against the order which is passed by adjudicating authority. तो अगर आपको याद होगा तो आपको ये समझा चुका हूं कि यहां पर डिप्यूटी लेवल या फिर असिस्टेंट लेवल की अपील स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में जाती है, बराबर. और वो अपील्स उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट स्पेशल डायरेक्टर अपील्स सुनता है. याद आया? So special director appeals is an officer who is appointed by the central government to hear the appeals against the order of adjudicating authorities. ठीक है? Clear? Then describe the types of entities which is included in definition of person in the content. Person कौन होता है? हाँ, very good. HUF. Perfect, perfect. Very good, very good. Yes, yes. The definition of person includes individuals, HUF, families, HUF, companies, firms, association, any agency, branch owned by such person. Okay? So that means कोई भी person के definition में कौन कौन आता है? Any kind of individual, HUF, companies, firms, association, branch, agency. Okay? ये सब person के definition में आते हैं. याद रहेगा? Okay? Clear? Very good. Acha, how is person resident in India defined in the content? Person who stays for more than? Perfect, perfect, perfect. And? Eh? अरे तू इनकम टैक्स ले आई. Who stays for more than 182 days. Perfect, perfect. And does not include a person who is going out of India for permanent employment, business, vocation. याद आया? Exactly. So a person resident in India is defined as someone who resides in India for more than 182 days during the previous financial year, with certain exclusion as individual employed or carrying on business outside India. Okay. So if some person is carrying on business or employed outside India, that is not included in the definition. तो जो भी person previous financial year में 182 days रहता है, okay, वो बन जाता है person resident in India, excluding the person who is going out of India for a employment, business or permanent vacation के हिसाब से. Okay, clear? याद रहेगा? Very good. Okay, what do you mean? What does the term repatriate to India means? Okay, come on, come on. Come on, that's the revision. That's conceptual clarity. Yes, I'm looking at people now. Okay, how will you describe to the examiners? Okay, earning a money, taking outside India for business employment or getting into India. Okay, so what is the repatriation? The term repatriate to India, repatriate to India refers to bringing into India the realized foreign exchange and either selling it to the authorized person in exchange of rupees and holding an account with the authorized person. That's it. Repatriation का मतलब ये होता है कि आप पैसा इंडिया में लेके आने के बाद यहाँ पे ऑथराइज पर्सन को दे दोगे और उनसे उसको रुपीज में कन्वर्ट करवा लोगे. याद रहेगा? गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ डिफाइन द टर्म पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. More than 180 days. I think I have repeated that. So, person resident in India is someone who has resided for more than 180 days during the previous financial, excluding the categories of individuals. Yes. Branch, agency, or offices, bodies, corporate. Perfect. Absolutely perfect. Good.
Good, Gautam. Good going. Okay. Define the term person as defined in the country. I think that is there. We have done that. Okay. Do you need authorization to deal in foreign exchange or foreign securities? Do we need that? Yes. Yes, authorized person such as authorized dealer, money changer, offshore banking unit is required to deal in foreign exchange or foreign security. Okay? Acha, tell me this one. When was Foreign Exchange Regulation Act 1973 reviewed and amended? ये नहीं मॉड्यूल बताओ when it is talking about FERA, not FEMA. FERA, Foreign Exchange Regulation Act 1973 की बात हो रही है. When it was reviewed and amended? एक गधा एक खींच के देगा 93 में क्या कुछ भी. अरे वाह, इसको बोलते हैं दिमाग. सो 1993 था जब पहली बार फेरा का अमेंडमेंट शुरू हुआ था, और मैंने आपको बताया था फेरा 93 में अमेंड हुआ, 94 में अमेंड हुआ, 95 में अमेंड हुआ, 96 में अमेंड हुआ, फिर 1999 में गवर्नमेंट ने सर पकड़ा और बोला अब हम फेमा ही लेके आते. ओके, सो पीयूष 1999 नहीं, इट इज 1993 से अमेंडमेंट शुरू हुआ था. ओके, क्लियर, एवरीवन क्लियर? ठीक है, सो आई एम क्लियरिंग ऑल योर कंसेप्चुअल पार्ट्स. ठीक है, एग्जाम में इस तरह के न्यू कोर्स में स्पेशली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ओके, तो उसके लिए कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाएगा, और जहां पर क्वेश्चन की डेप्थ पूछेंगे तो डेप्थ भी लिखनी होगी. ठीक है, चलो, वेरी गुड. What type of transaction is the transfer of issue of foreign security considered under the FEMA? What type of transaction is this? तो ये कौन सा है? What type of transaction is the transfer or issue of foreign security considered under the FEMA? What do you think? That shows nahi prepared hai. The transfer of issue of foreign security is considered as a capital account transaction. Shares in shares के deal करते हैं. It is considered as a capital account transaction. Okay, I think अब थोड़ा conceptual clarity आना शुरू हो रहा है, या यूँ बोलूँ थोड़ा टॉपिक और क्लियर हो रहा है. ओके, क्योंकि यही चीज एग्जाम में आपको हिट करती है. ओके, डिस्क्राइब द टर्म फॉरेन सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ओ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. Perfect. Very good. So foreign security refers to any kind of security such as shares, stocks, bonds, debentures denominated in foreign currency, including securities which were redemption of shares. Okay, so any kind of security जिसमें shares, stocks, bonds, security है, याद रखना, foreign security refers to any kind of security such as shares, stocks, bonds, debentures denominated in foreign currency, including securities where the redemption are payable in Indian currency. Okay, याद रहेगा? Very good. Okay, what is foreign exchange defined in the FIMA Act? What is foreign exchange? What is foreign exchange? How will you say? Dealing in. सर मुझे पता नहीं, पढ़े कब जमाना हो गया. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं मालूम यार. लो, foreign exchange include any kind of foreign currencies and deposits and credits and drafts, traveler's check, letter of credit, bills of exchange, whether expressed in Indian currency or foreign currency. याद आया? पढ़ा है ना? ठीक है, very good. What does the term export according to section 2L of Foreign Exchange Management Act means? What is export? Anyone? What outside India? Selling outside India. What outside? So what do you mean by exports? अपने books वगैरह इसलिए मैं बोला था ready रखना so that you can see it फटाफट. So exports means taking out of goods from India to a place outside India, or provision of services from India
to a person outside India. Okay, taking the goods outside India or yes, Pariksha, correct, good one. So if you are taking goods from India to outside India or services to from India outside India, that is called as exports. What do you mean by currency notes under Foreign Exchange Management Act? Currency notes क्या था? Section 2 clause I. Currency notes. What do you mean by currency notes? Okay. So in this case, याद रखो, currency notes includes cash in the form of coins, bank notes, which are authorized by law and circulate as a medium of exchange. Currency notes includes cash in the form of coins and bank notes, which are authorized by law and circulate as a medium of exchange. याद रहेगा? Everyone? Very good. Okay, describe the term authorized person as per Foreign Exchange Management Act. Okay, the one who deals in foreign exchange transaction, but he deals in foreign exchange transaction. He is authorized to deal in foreign exchange transaction. Okay. Yeah, the kind of bankers. Yes, got the good one. See, the authorized person refers to a authorized dealer, money changer, offshore banking units, or any other person authorized to deal in foreign exchange of foreign securities. So who is the authorized person? Authorized person refers to the authorized dealer, money changer, offshore banking units, or any other person who is authorized to deal in foreign exchange of foreign security. याद है याद है याद है, अभी का भी पढ़ के दिमाग में बिठा लो, ये सारे कंसेप्ट इधर ही क्लियर हो जाएंगे. Okay, fine. Then अच्छा, what are some significant developments that took place since 1993 in relation to foreign exchange? Anyone remembers that? जब बता रहा था 1993 में इसके बाद ये हुआ नहीं, ठीक है चलो. If you get this kind of question, आपको समझना है कि बहुत कुछ हुआ था, but short down, narrow down करते हुए this much. Remember, substantial increase of foreign exchange reserve हुआ था. क्यों? Liberalization, globalization हुआ था. So if you remember, ये आपके कहीं और नहीं, इकोनॉमिक्स की बुक्स में थे. So substantial increase of foreign exchange reserve, growth in foreign trade, ये हुआ था. Current account transactions बढ़ने लग गए थे. And then rationalization of tariffs has started. Okay, liberalization of Indian investment started. Increase in external commercial borrowings has started. And participation of foreign institutional investors in stock exchange, that started. सर ये है क्या? कुछ नहीं, आपके फेमा के जो चैप्टर्स थे उसी का समरी है. ईसीबी का चैप्टर था, फेमा का चैप्टर था, रेशनलाइजेशन था, उसी का समरी है. बराबर. तो डोंट गेट कैरिड अवे. क्या क्वेश्चन है यार, 1993 से क्या हुआ होगा? तो जितना आप फेमा पढ़ रहे हो वही हुआ है. Got it? Substantial increase in foreign exchange reserves, growth in foreign trade, rationalization of tariffs, current account transactions, convertibility, liberalization of Indian investments, and increase in access to the external commercial borrowings. Is that clear, everyone? Okay. Now, what were the objectives of FEMA? Chalo, come on, give me this one. Perfect. Beautiful. Beautifully said. Facilitating external trade and payments for promoting orderly maintenance of foreign exchange in India. और जो तुमने बोला वो preamble था, to consolidate the law in relation to foreign exchange, वो भी preamble का part था, तो that also you can write. Okay, so what are the objective of FEMA? Facilitating external trades and payments for promoting of orderly development and maintenance of foreign exchange market. याद रहेगा? Everyone clear? Comfortable? Very good. अच्छा, what legislation replaced Foreign Exchange Regulation Act 1970? FEMA. Okay, yeah. So it was Foreign Exchange Management Act that replaced FEMA. ठीक है, चलो इतना तो आ ही रहा है. What was the further? Why was further review of Foreign Exchange Regulation Act was undertaken? Prior, it was a very stringent act. वेरी रिस्ट्रिक्टिव कंजर्वेटिव एक्ट. याद है फेरा और फेमा का डिस्टिंग्विश किया था? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है.
So, in that case, in the light of subsequent developments and experience in relation to foreign trade and investment, we needed a new law, and that's why FEMA was put in. एग्जैक्टली यू कैन राइट एग्जैक्टली मैं तो सिर्फ शॉर्ट डाउन करके आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ एज अ ऑब्जेक्टिव अगर आपको आया तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये okay that is the outcome. So in the light of subsequent development and experience in relation to foreign trade and investments, that is why Foreign Exchange Regulation Act was put into place. Okay, clear? Fine. So that was some of the questions. Let's see more of them. अभी तक तो जो पार्ट देखे थे वो थोड़े इंट्रोडक्शन के पार्ट थे, अब थोड़ा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स और ये सब के पार्ट को जोड़ते हुए लेट्स सी. Describe liberalized remittance schemes for resident individual. What is the liberalized remittance scheme? Okay. What exactly is a liberalized remittance scheme? What is the liberalized remittance scheme? कुछ याद आया कि भूल गया? पढ़ा है ना कहीं ना कहीं? Okay. Liberalized remittance scheme is resident individual can remit up to 250,000 US dollars per financial year for permitted current and capital account transactions. Liberalized remittance scheme is resident individuals can remit up to 250,000 US dollars per financial year for current or capital account transactions. What is the meaning of permit? Remit, that is to send. SEND. That is to send. That is called remittance. Okay. Achha, can remittances under the liberalized remittance scheme be consolidated for family members? Matlab your papa has 250, you have 250, mummy has 250, bhaiya has 250. Can you consolidate or not? क्या लगता है? मैं बोला पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है फेमा का भी. So if you are staying together, तो बहुत कुछ समझ में आएगा. What do you think? And yes, the remittance can be consolidated for the family members if they comply with the terms and conditions. The remittance can be consolidated from the, so your papa and your mummy and your bhaiya and your bhabhi and your sister and everyone can come together, and yes, you can have a consolidated limits also. So if your family is going out there, each one enjoys $250,000, but if it is a family going out there, the combined limit is 250 plus 250 plus 250 plus 250. That's how it is. Okay. Remember, yes, it's 250,000 per person. Okay, but family के साथ वो consolidate हो सकता है. If you remember, मैंने युवराज सिंह का एग्जाम्पल भी दिया था कि उसकी मम्मी के साथ भी हो गया था, तो मम्मी की लिमिट और युवराज सिंह की लिमिट कंबाइंड हो जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. Okay, then explain the facility which is available to students pursuing studies abroad in the liberalized remittance scheme. Come on. You need perfect, good one. So it was foreign exchange up to 250,000 US dollars or its equivalent can be released without an estimate from foreign university. Okay, beyond that you need a estimation and a certification कि आपको इससे ज़्यादा क्यों चाहिए. तो $250,000 तक आप रिलीज कर सकते हो. You don't need any estimation कि ये 250 तक की खर्चा होगा या उससे कम होगा या कितना होगा. Okay, that is allowed. Is that clear for everyone? Yeah. Authorized dealer. Okay, how much foreign exchange can be released for accompanying a patient going abroad for medical treatment? Paka 250? Yeah, okay. So up to 250,000 per financial year. Good. चलो तुम्हारे concepts थोड़े अच्छे हैं, clear है. So हाँ, again उसके ऊपर रहेगा तो डॉक्टर का medical certification चाहिए. Okay, answer me this one. What is the maximum amount of foreign exchange that can be released for a medical treatment abroad without an estimate from hospital? Again, it's 250,000 और उसके ऊपर रहेगा तो exactly इसलिए वो question लिया था. Okay, tell me this one. Describe the expenses that are treated as resident current account transactions outside liberalization. Describe the expenses that are treated as residual current account transaction outside LRS.
business trips, Preksha, or anything else? Emigration. Okay. Well, expenses which is borne by an entity for an employee being deputed for certain purpose is not a part of LRS. Okay, ये कई लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा. अच्छा, एक बता दो, हर एक की पर्सनल ट्रिप तो थी, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, तो दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ LRS. दैट्स अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ LRS. समझा? तो कई बार आप लोगों की ट्रिप इंडिया के बाहर आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, बिजनेस क्लास में बेचता है, वहां पे रहना खाना पीना, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ LRS, क्योंकि उसमें आप अपना खर्चा नहीं कर रहे, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इज नॉट कवर्ड इन LRS. इज दैट क्लियर? ओके एवरीवन, ठीक है. एम्प्लॉयर की लिमिट 250 नहीं रहेगी, उसकी लिमिट अच्छी है, क्योंकि वो सेंडिंग एम्प्लॉयज है. सेंडिंग एम्प्लॉयज इन बिजनेस एक्सपेंसेस में आता है. ओके, उसकी लिमिट किस में आएगी? भूल गया. EFC अकाउंट याद है? उसमें कवर होती है. एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट. ओके, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, मैं इसलिए बोला आपका पूरा स्टडी मैट क्लियर करेगा. या समथिंग काइंड ऑफ ट्रैवल अलाउंस, समथिंग लाइक दैट. अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट अ रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन अवेल फॉर अ बिजनेस ट्रिप इन फाइनेंशियल ईयर? पक्का 2, irrespective of number of trips. Okay, yeah. A resident individual can appeal foreign exchange up to $250,000 for the business trip in financial year, irrespective of the number of visits. Everyone clear? Concepts clear? Okay, very good. Achha, what types of visits are considered as business trips in LRS? International conference, seminars, okay, trainings, specialized trips. Okay, fine, good one. So visits in connection with attending international conferences, seminars, specialized training, apprentice training are considered as business trips. Perfect, clear, पढ़ा है, ठीक है. बस यही होता है जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है ना, तो यू फील लाइक, और ये टीजिंग पार्ट आपको एग्जाम में आता है. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, ये क्या था, ये क्या था. ओके, फाइन. सो आई हैव मेड इट लार्जली इन द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो दैट न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स दोनों को ध्यान में रखते हुए करना था. ओके. अच्छा, व्हाट आर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड? कितना था लिमिट? 250. Well, for the purpose maintenance of relative under 279 abroad, you can give any money. It is not 250. The purpose is to support the maintenance of relative as defined, okay, residing abroad. तो इसके लिए कोई 250 की लिमिट नहीं थी. Any money that can go abroad. Okay, पर वैसे तो 250 की लिमिट ही है सब जगह, तो assume 250 चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Current account. Okay, what are the maximum amount of foreign exchange that a person wanting to emigrate can draw from AD category 1 bank and AD category 1 bank 2? 250 ऐसे ही बोल रहा है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं. Mansi is saying 250. क्या बोलते हो, सबका 250? Well, a person wanting to emigrate can withdraw foreign exchange up to the amount prescribed in the country of emigration or ₹250,000. तो अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया एमिग्रेट करना है, तो ऑस्ट्रेलिया के एमिग्रेशन के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा? उतना या $250,000. समझा? क्लियर? क्योंकि अगर आपको पैसा ज्यादा लग रहा है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको ज्यादा पैसा लेके जाना है. इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर. अच्छा, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 बैंक मैंने समझाया था. बेसिकली कैटेगरी 1 बैंक्स आर वन who deals directly in the foreign exchange. Category 2 banks are one who takes a permission to deal in the foreign exchange. Okay, याद रहेगा. तो category 1 banks are banks who directly deal in the foreign exchange, and category 2 banks are banks जैसे cooperative banks होते हैं, they deal it but they take with the permission of the RBI. Okay, clear? अच्छा, what is the maximum amount of foreign exchange that a person going abroad for employment can draw per financial year? ये भी 250 है. Everyone clear? 250 है.
क्या लगता है? एम्प्लॉयमेंट है तो कम होगा ज्यादा होगा? वेल, a person going abroad for employment can withdraw 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर. तो अगर आप इंडिया के बाहर काम करने के लिए जा रहे हो तो बाहर जाके रहोगे, आपका एम्प्लॉयर आपको बाहर नहीं भेज रहा है, आप जा रहे हो बाहर इंडिया के, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स के हिसाब से आप अपनी जेब से $2.5 लाख तक खर्चा कर सकते हो बाहर रहने के लिए. फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, काम आ गया, तुम एंजॉय. समझा? तो याद रखना, ऊपर हमने देखा था एम्प्लॉयर भेज रहा है, वो अलग होता है, और ये आप खुद जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. अच्छा, what is the maximum amount of gift or donation that a resident individual can remit outside India per function? हाँ सर, liberalized remittance scheme सर ऐसे याद रहता है, 2,50,000 बस रट्टा कर लेने का. So a resident individual can remit up to 2,50,000 as gift to a person residing outside India as a donation to an organization outside India. Is that clear, everyone? Okay. Describe the limit for private visits abroad under the liberalized remittance scheme. Wait, 2,50,000? Okay. A resident individual can obtain foreign exchange up to $2,50,000 in any one financial year, irrespective of the number of visits undertaken during the year. Allowed hai. Barabar? And what are the different types of transaction which is covered under the liberalized remittance scheme? Chalo, briefly. Private visits, emigration, maintenance of relatives. Okay, or gift donations, medical treatment. Okay, so let's have liberalized remittance schemes covers current account transactions such as private visit, gift or donation, going abroad on employment, emigration, maintenance of relative, business trips, medical treatment, and studies abroad. Got it? फटाफट याद रहेगा, वापस से रीड कर लो, दिमाग में बिठा लो. LRS covers current account transactions. LRS covers current account transactions such as private visits, gift or donations, going abroad on employment, emigrations, maintenance of relatives abroad, business trips, medical treatment, and studies abroad. Clear? दिमाग में बिठाया? Everyone? Okay. अच्छा, who is eligible to avail liberalized remittance schemes? Who is eligible to avail the liberalized remittance schemes? Resident individuals, yes. Liberalize is available by resident individuals and not for corporates, partnership firms, HUF and trust. It is for resident individuals. Everyone clear? Perfect. अच्छा है, concept थोड़े clear है. Define the term current account transactions. क्या था current account? ऊपर तो liberalize पड़ा था. The transaction within a current account is a current account. A transaction which is not a capital account is a current account, sir. $5% कैसे? Okay, chalo. So this is how it is. A current account transaction refers to a transaction other than the capital account transaction, ये भी बराबर बोला, involving payments relating to foreign trade, business services, short-term banking, credit limits, interest on loans, okay, then net income from investment, remittances for living expenses, expenses for travel abroad, education and medical care of family members. तो जितने भी आपने लिस्ट में सब पढ़े थे वो सब लिखने का था. So don't get shocked and current account क्या था? Okay, fine. Yeah, it is a frequent in nature. Yes, Piyush. Other than capital account transaction. Perfect. Okay, okay. Tell me, what is the maximum amount of remittance which is allowed per project for other consultancy services procured outside India? 250. कुछ भी डालने का, किधर भी डालने का. 1 crore 10 lakh. गौतम कुछ भी नहीं डालने का. 250. The remittances exceeding, okay, 10 lakhs US dollars per project for other consultancy. मैंने other consultancy पूछा था, infrastructure नहीं.
इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 करोड़ यूएस डॉलर्स था, अदर का 10 लाख यूएस डॉलर था। कुछ कुछ याद आया? हर जगह 250 लिख के मत आ जाना। ओके, ये सब समझाया था, मैं बोला था ऊपर वाले इंडिविजुअल से, नीचे वाले अदर देन इंडिविजुअल से, और उस नीचे वालों में हमने प्रॉपर्टी बेचने को देखा था, प्रोजेक्ट कंसल्टेशन देखा था, टाटा वाले ने डोनेशंस दिए थे इंडिया के बाहर, वो देखा था। ओके, अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेमिटेंस पर प्रोजेक्ट फॉर कंसल्टेंसी सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया? वेरी गुड, नाउ इट इज क्लियर, रेमिटेंसेस, okay, exceeding 1 crore per project for consultancy services. Okay, इसको यूएस डॉलर में 10,000 बोलते हैं। ओके, यूएस डॉलर्स में 10,000 बोलते हैं, हम लोग उसको 1 करोड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, बस यही फर्क होता है। क्लियर? Describe the foreign exchange facility available to a person who is resident but not permanently resident in India, is on a deputation to the office or branch of foreign company in India. बताओ 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 बताओ। Foreign exchange facility available to a person who is resident but not permanently resident and is on a deputation to the office or branch in India of a foreign company. बोलो बोलो। कुछ याद आता है? मैंने इसके साथ एक स्टेटमेंट बोला था, लंदन से आया मेरा दोस्त। तो कितना ले बेटा? ओके, चलो। Such person can make a remittance up to the net salary after deduction of taxes and contribution to the PF and other deductions. So ये कितना पैसा खर्चा कर सकता है? जितनी भी उसकी सैलरी उसको मिल रही है वो सब का सब माइनस ऑफ टीडीएस एंड अदर पीएफ प्रोविजंस के हिसाब से, माइनस टीडीएस एंड अदर पीएफ प्रोविजंस के हिसाब। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। याद रखना दिमाग में। ओके, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए अभी। ऊपर अभी तक क्या होता है? यू आर रीडिंग रॉ, नाउ यू आर रीडिंग समथिंग मोर देन रॉ। इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस उठाए जिसमें आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, तो ऐसा लगेगा कुछ आता है, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। ओके, डन? एवरीवन क्लियर? $10,000 10,000 इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। ओके, मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम इतना है। मिनिमम तो आपको जितना चाहिए खर्चा कर लो। What is the applicable limit for an individual who remits any amount under the liberalized remittance scheme in a financial year? ये तो आना ही चाहिए। What is the applicable limit? Who remits any amount under the liberalized remittance schemes? 250. Well, the applicable limit for such an individual who would be reduced to $250,000 from the amount remitted. तो जितना आपने खर्चा किया है उस साल में, उस वो $250,000 में से रिड्यूस होगा। As simple as this. Okay, $250,000 से रिड्यूस होगा। Then, under what circumstances can an individual avail of exchange facility in excess of the limit prescribed under the liberalized remittance scheme? Under what circumstances can an individual avail of an exchange facility in excess of the limit prescribed under the liberalized remittance scheme? और क्या था? मेडिकल था, एजुकेशन था, और यही दोनों था। देखिए, an individual can avail of the facility in excess of the limit prescribed under the liberalized remittance scheme if it is required by the country of emigration or medical institute or any university. परफेक्ट, ये 3 जगह पे था जहां पे 2,50,000 से ज्यादा का भी खर्चा हो सकता है। रिमेंबर, एमिग्रेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट और सच अदर फैसिलिटी। ओके, हाँ, अगर आप जहां जा रहे हो तो वहां पे इस केस में आपको याद है मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो वहां पे इमिग्रेशन के लिए कितना खर्चा लगेगा? या $2,50,000।
ठीक है, तो वो आप परमिशन ले सकते हो. अच्छा, व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉर विच इंडिविजुअल्स कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000? What are the purposes for which individual can gain foreign exchange facility within the limit of 2,50,000? ओके, वही है, बट क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग था बस. Okay, so yes, individuals can avail foreign exchange facility for private visits, gift or donation, going abroad for employment, immigration, maintenance of close relative, travel for business, medical expenses, expenses in connection with medical treatment abroad, studies abroad, or any other current account transactions के लिए आप 250 के अंदर avail कर सकते हो. Okay, clear? Okay, describe Rule 5 and its application to the remittances made from resident foreign currency account. Describe Rule 5 and its application to the remittances made from resident foreign currency. Rule 5 कुछ याद आता है? Rule 5 नहीं. Bank account. Okay. Rule 5 does not apply to remittances from residents foreign currency account. सर ये Rule 5 था क्या? ऊपर जो आप पढ़ रहे थे इतनी देर से लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वही था Rule 5. कह दो. इतनी देर से जो पढ़ रहे थे दैट वाज Rule 5 ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, रेमिटेंसेस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का पार्ट था, वही Rule 5 था. और वो आरएफसी को नहीं लगता. यस, क्या आरएफसी को $250,000 की लिमिट लगती है क्या? नहीं लगती. याद है सलमान खान का केस लिया था कि सलमान खान ने इंडिया के बाहर घर खरीद लिया था आरएफसी अकाउंट यूज करते हुए. याद आया? तो इन शॉर्ट अगर आपको आरएफसी अकाउंट यूज करना है तो मैंने आपको पहले भी बोला था आपको $250,000 की लिमिट उसमें नहीं लगती है. ओके, मैंने आपको ये भी बताया था बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स आरएफसी अकाउंट रखते हैं, शूटिंग के वजह से बाहर जाना पड़ता है ये सब के लिए. याद आया? तो उस पे $250,000 की डॉलर्स की लिमिट नहीं लगती है. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर थ्रू? ठीक है, देन आगे चलू. What governs drawal of foreign exchange for transactions included in Schedule 3? What governs the withdrawal of foreign exchange for the transactions included in Schedule 3? पास नहीं आता है? आरबीआई. Foreign exchange management current account transactions Amendment Rules 2015 governs prior approval of Reserve Bank for withdrawal of foreign exchange covered in Schedule 3. याद है Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 तीन पढ़े थे. That was Schedule 2. Schedule 3 क्या था? अरे इतनी देर से पढ़ रहे हो. आरबीआई अप्रूवल जिसमें गिफ्ट, डोनेशन, एमिग्रेशन, वो Schedule 3 है. ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम उसी में तो कवर्ड है. कुछ याद आया? करंट अकाउंट लिखते हुए मैंने बताया था Schedule 1 प्रोहिबिटेड, Schedule 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, Schedule 3 आरबीआई अप्रूवल. फिर मैं बोला उसमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इंक्लूड होगी. लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग वंडरलैंड पे चले जाते हैं. ये कहाँ था? ये था क्या? नहीं, ऐसा था ही नहीं. ओके, सो आइए देवियों सजनों, हम देखते हैं कब बनेंगे कंपनी सेक्रेटरी. So when is the prior approval of Government of India required for certain transactions? Okay. All Schedule 2 transactions. Right? So prior approval of Government of India is required for transactions stated in Schedule 2, except when the payment is made from RFC account of the remitter. याद आया? Okay, very good. हाँ, EFC अकाउंट भी ऐड कर सकते हो. That is also allowed. What transactions are prohibited from withdrawal of foreign exchange to Schedule 1? A prohibited. Lottery winnings. Exactly. So transaction which is specified in Schedule 1 like travel to Nepal, Bhutan, transactions with person of Nepal, Bhutan prohibited from withdrawing and such सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशंस बाय आरबीआई. तो बाकी सारे वो चीजें जो आप प्रोहिबिटेड में बोल रहे हो वो सब इंक्लूड कर लो. ओके,
that is lottery winnings or investment in joint venture, wholly owned subsidiaries, standing commission, ruby straight credit route, ये सब आ जाएगा. Perfect, perfect. Okay. Give an example of a current account transactions covered in FEMA. चलो कोई example बोलो. Of a current account transaction covered in FEMA. कोई भी example. ऐसे ही पूछा है. Give an example. देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है. कोई एग्जाम्पल बोलना. ऐसा बोल, आई एम स्पेंडिंग सो मच रुपीज आउट. कोई भी एग्जाम्पल डाल दे. सो एग्जाम्पल इंक्लूड्स लाइक पेमेंट टुवर्ड्स प्राइवेट विजिट्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, क्लोज रिलेटिव्स. कोई भी डाल सकते हो. स्टडीज अब्रॉड. ओके. नॉट कवर्ड इन फेमा. सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के एग्जाम्पल डाल सकते हो. अच्छा, define withdrawal or drawal as per the foreign exchange management current account transaction. What do you mean by drawal? जिसको सिंपल वर्ड में withdrawal भी बोलते हैं. What do you mean by drawal or withdrawal? Withdrawing money. Okay, what do you mean by drawal or withdrawal? Well, drawal refers to an act of drawing the foreign exchange from the authorized person, which includes opening a letter of credit, using the international credit or debit card or ATM cards, or any action that creates a foreign exchange liability. समझा? That is drawal. कि सर अगर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं, अगर मैं अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड या ऑथराइज पर्सन से पैसा निकाल के लेके जाऊंगा, तो ये मेरे लिए विड्रॉवल या ड्रॉवल हुआ. Is that clear for everyone? Okay, fine. So next is what are the powers of central government regarding the current account transactions? छोटा ज़्यादा नहीं था. Central government in consultation with RBI has power to impose reasonable restrictions on current account transactions. याद आया? So वही Schedule 2 के हिसाब से, but central government generally as per Section 3 has powers to impose reasonable, and Section 5 के हिसाब से current account transactions के अंदर वो reasonable restrictions impose कर सकता है. Okay? Fine. So these are some of the questions in relation to liberalized remittance schemes. So these are other set of questions that we have to see. Describe the regulations imposed by RBI on establishment of branches of office by Indian or by non-residents. For conducting business activity, yeah. RBI has powers to regulate, prohibit, restrict the establishment of branches of office in India by non-resident conducting business activities. Okay, so RBI branches वगैरह को govern कर सकती है for conducting the business activities outside India. Okay. Okay. Then, how can the payment for investments in India be made by a person resident outside India? How can the payment from investment in India be made by the person resident outside India? Sorry. Huh? Approval of authorized dealer. Through the approval of authorized dealers. Okay, through the authorized dealer. So payment can be made through the remittances from abroad through the normal banking channel by debit to the account maintained with the authorized person in India. So आप authorized person से भी कर सकते हो या normal banking channel से. तो बार बार मैं बोलता था normal banking channel से payment करना रहता है इंडिया के बाहर. Normal banking मतलब bank to bank transactions, no cash. ठीक है? अच्छा, tell me this one. What are the restrictions on investment in India from a person resident outside India? नहीं. What are the restrictions on investments in India for a person resident? एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता. ओके, इन्वेस्ट नहीं कर सकता एग्री. ओके, या.
सो नो इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन चिट फंड, निधि कंपनी, हाँ 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 सर याद आ गया हाँ सर, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, याद आया? हाँ सर याद आया, याद आया, ये तो पढ़ा हुआ है सर, बस क्लिक नहीं हो रहा था। ओके, अच्छा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दैट अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन अंडरटेक। Okay, simple था. Foreign currency account transact foreign currency accounts in India and remittances outside India of the capital assets is allowed. कैपिटल एसेट्स क्या है? वही जो आप चीजें बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, या प्रॉपर्टी बाहर खरीदना, वो सब एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स। तो मैंने आपको याद है अगर बताया था, इंडिया के पीआरओआई के लिए एक्वायरिंग एसेट्स इन इंडिया और लाइबिलिटीज इन इंडिया, और पीआरआई के लिए एक्वायरिंग एसेट्स और लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमीशन ऑफ पेमेंट ऑन एक्सपोर्ट अंडर द रुपी स्टेट क्रेडिट रूल? रुपी स्टेट क्रेडिट रूल, what are the restrictions on payment under rupee state credit rule? Okay, so commission of payment of exports under the rupee state are restricted to 10% of the invoice value of the export of tea and tobacco. याद आया? मैं बोला था रशिया में ना चाय और टोबैको बहुत दिखता है, हम रशिया गए थे उसके लिए। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, अगर तुम्हें याद आता है तो। ओके, देन अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एनआरएसआर अकाउंट? थोड़ा सा नॉन रेसिडेंट स्पेशल, okay, so that shows your preparation. NRSR account refers to non-resident special rupee account scheme where the interest income on the funds held in this account can be remitted outside India. अब ये अकाउंट बंद हो गया है, अब आपको एनआरई एनआरओ अकाउंट चलता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय एनआरएसआर अकाउंट इज दिस? ओके, ये भी बताया था, और ये पता है कहां पे लिखा था? शेड्यूल 2 के अंदर समझाते हुए नीचे लिखा था एनआरएसआर अकाउंट से सारे रेमिटेंसेस बंद हो गए। चाहिए तो शेड्यूल 2 देखना, समझा? सब ट्यूबलाइट मूवमेंट चल रहे हैं, पर सारे कंसेप्ट आई थिंक अब क्लियर होते जाएंगे। ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ transactions classified in capital account transaction of the person resident outside India? और कुछ? The type of transactions that include the investments in India by way of issuing of securities by a body corporate or entity in India. Okay, investment in India by a person resident outside India, acquisition and transfer of immovable property in India, guarantee by the person resident outside India favor of the Indian, import-export transactions of currency notes by a person resident outside India and deposit by the person resident outside. ये सब capital account transactions है। और अगर आप चाहिए तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में जाके उसका डेफिनेशन देखना, नीचे सारे एग्जांपल्स दिए थे वही है ये। याद आया? वेरी गुड। अच्छा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड अंडर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्सन। Describe the type of transaction classified as a capital account transaction of resident in India. Capital account transaction of a resident. Types of transaction classified under the capital account transaction of a person resident in India. ये PRI के लिए है, क्या था? अरे PRI क्या करता है? The PRI types of transaction include investments in फॉरेन सिक्योरिटीज। हम उल्टा इंडिया के बाहर की बात करेंगे, जबकि ऊपर पीआरओआई के लिए था तो वो इंडिया की बात कर रहा है, ये इंडिया के बाहर की। इन फॉरेन सिक्योरिटी, इन इमूवेबल, सेम ही है, बस हम इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं। तो
that is investment in immovable property outside India, guarantee issued by a person resident India outside India, exports obligations by outside India wala, overdraft facility by a person resident in India to outside India, maintenance of foreign exchange account outside India, यानी पीआरआई जो इंडिया में है, इंडिया के बाहर क्या करता है। ये एग्जाम में एक दो बार आ भी चुका है कि पीआरआई या पीआरओआई, ये लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों जगह पे दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि पीआरओआई के लिए क्या था और पीआरआई के लिए क्या था। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज प्लीज मत करके आना। ठीक है, ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग, एनीवन? एकदम आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ समथिंग, एकदम से, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग? सर इनकम टैक्स में पढ़ा था एक जमाने में, वैसे ही आपके मॉड्यूल में दिया था, वहीं से उठाया मैंने। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग, एनीवन? अच्छा, the requirement of dividend balancing applies to a committee which is remitting dividend. That's simple. डिविडेंड बैलेंसिंग का मतलब होता है जब आप इंडिया के बाहर फंड्स भेज रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो डॉलर में कन्वर्ट होगा उसका रेट कितना बैठेगा। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड बैलेंसिंग। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, अगेन ट्यूबलाइट मूवमेंट, डिफाइन कैपिटल अकाउंट, अभी ये तो आना ही चाहिए। Which alter the assets or liabilities? Exactly. Very good. So a capital account transaction is any transaction that alters the assets or liability of a person resident in India or the assets or liability in India of a person resident outside India. ठीक है, आया? Very good. How does subsection 4 allow the residents in India to hold, own, transfer, invest in foreign currency or foreign security or immovable property outside India? May hold, own or transfer, याद आया? Yes. Section 6 का subsection 4 है ये. Okay? So yes. Subsection 4 allows a resident in India to hold, own, transfer. याद है मैंने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, hold, own, transfer, नीचे लेके। So hold, own, transfer foreign currency, foreign security or immovable property outside India if they are acquired when they were resident outside India or inherited from someone who was resident outside India. Is that clear? तो अगर आप इंडिया के बाहर से एक्वायर किया था या उस टाइम के इंडिया के बाहर ही आपने उसको कमाया है तो आप रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। आरबीआई ने बोला रखो, अलाउड है। ओके, डिफाइन द पावर ऑफ आरबीआई इन रिलेशन टू गिविंग ऑफ गारंटीज और श्योरिटीज और डेट्स और लायबिलिटीज। इन छोटा ही था पर याद नहीं है। आरबीआई हैज पावर टू प्रोहिबिट और रेगुलेट द गिविंग ऑफ गारंटीज और श्योरिटीज फॉर डेट्स बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। आरबीआई कैन प्रोहिबिट, ये आपने पढ़ा हुआ है, डोंट वरी, ये सब लिखा हुआ है, लिखा है ना? हाँ, 6 ही चल रहा है। मजे की बात है, देखो नोट्स में पढ़ेगा तो अभी ऐसा लगेगा अरे ये तो था और मेरे को क्लिक ही नहीं हुआ। यही चीज तो मैं आपको बता, एबिलिटी डेवलप कर रहा हूं कि आपको ये क्लिक होना चाहिए एग्जाम में कि ये पढ़ने के बाद अरे हाँ ये था, अरे हाँ ये था। ओके, दैट शोज योर प्रिपरेशन। ठीक है, अच्छा, व्हाट कैन आरबीआई प्रोहिबिट और रेगुलेट इन टर्म्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन इन इंडिया? ये भी पढ़ा हुआ है। हेलो, RBI can prohibit or regulate the acquisition of immovable property in India for non-residents. तो नॉन रेसिडेंट्स अगर इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं तो आरबीआई डिसाइड करेगा कितनी परमिशन उनको देनी है और कितनी नहीं देनी है। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आरबीआई इन रेगुलेटिंग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसीज। कैन दे प्रोहिबिट, कैन दे रेगुलेट, कैन दे अलाउ? Yes, they can. So RBI has the authority to regulate the export, import and holding of currencies also. ठीक है, Can Reserve Bank of India regulate borrowing and lending of foreign exchange?
Yes, they can. Yes, Reserve Bank can regulate, prohibit. ये पूरा सेक्शन 6 गया आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के साथ. Prohibit borrowing, lending of that. अच्छा, can Reserve Bank of India regulate or prohibit regarding foreign securities? Yes. The Reserve Bank can regulate and prohibit, restrict the transfer of any foreign security by resident in India or by a person resident outside India also allowed it. Okay. What does Section 6 of FEMA allow regarding the capital account transactions? What does Section 6 of FEMA allow regarding the capital account transaction? Section 6 allows Reserve Bank to specify the permissible capital account transaction limit and admissible. तो सेक्शन 6 आरबीआई को ताकत देता है कि कौन सा अलाउ करना है और कौन सा नहीं अलाउ करने का है. ओके, क्लियर. अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनीवन? एग्जैक्टली, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी बोल सकते हो. So capital, when an Indian party makes any investment in equity or acquires immovable property, is an example for that. Okay. So that was a series of current account, capital account transaction in terms of. Up next part of series. Who is considered as non-resident Indian? ऐसा है? Who does not stay for more than 180 days in previous financial year? But is Indian. ठीक है. आरबीआई के हिसाब से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके. अच्छा, what are the, how are the remittances subject to income tax clearances? और ये तो क्वेश्चन क्या है? How are the remittances subject to income tax clearances? कुछ याद है? मैंने बोला था इनकम टैक्स का क्लियरेंस लेना पड़ेगा इंडिया के बाहर भेजने के लिए. ये देखिए, remittances, they are subject to the payment of applicable taxes in India. The Reserve Bank does not issue instructions clarifying the tax issue under the FEMA, and it is the responsibility of the authorized dealer to comply with tax laws. तो जब तक आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इनकम टैक्स नहीं मिलता, तब तक आप इंडिया के बाहर रेमिटेंसेस नहीं कर सकते. याद आया? रेमिटेंसेस ऑफ एसेट्स का पूरा पार्ट पढ़ा था. हाँ, किसमें है ना? ओल्ड एंड न्यू दोनों में क्लब किया हुआ है. न्यू में डेफिनेटली है रेमिटेंसेस ऑफ एसेट्स. ओके, क्लियर. मैं ओल्ड एंड न्यू दोनों के सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा. और न्यू सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहले का 20 मार्क का क्वेश्चन ही होता है. ये सब ऐसे ही है. दैट विल टिंकल यू कि ये क्या था, ये आंसर लू कि ये, और जस्टिफाई व्हाई. Okay, so remittances are subject to the applicable taxes in India, and the Reserve Bank does not issue the instructions of clarifying the tax, and it is the responsibility of the authorized dealer to comply with taxes. Okay, what is the role of Reserve Bank in remittances of funds from the sale of assets in India? What is the role of Reserve Bank in remittances of funds for the sale of assets in India? The Reserve Bank approval is required for remittances of funds for sale of assets in India by the person whether they're resident outside India or not covered under the specified transactions. समझा? Reserve Bank approval is required for remittances of funds from sale of assets in India held by a person whether resident in or outside India under the. याद है? याद आया? जब आप इंडिया के बाहर भेजते हो पैसा एसेट्स बेच के, तो मैंने आपको बोला था आप लोग 1 मिलियन यूएस डॉलर्स पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट भी थी. कुछ कुछ याद आया? इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, डिफाइन रेमिटेंस ऑफ एसेट्स रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल. डिफाइन रेमिटेंस ऑफ एसेट्स रिक्वायरिंग द आरबीआई अप्रूवल.
Okay, fine. So yes, that is how it is. Remittance of assets requiring the RBI approval refers to the cases where remittances exceeds, ये कितना लिखा है US dollar? 10 lakhs per financial year on account of legacy, bequest, inheritance to a citizen of a foreign state or by NRI, PIO out of the balances held in NRO account. याद है पढ़ा था. अभी तो आपको देख देख के याद भी आ रहा होगा remittances of assets. मतलब किसी के मरने के बाद प्रॉपर्टी मिलती है उसको बिक्वेस्ट बोलते हैं. ओके जिसमें प्रॉपर्टी बिना विल के मिलती है. विल होती है, इनहेरिटेंस में विल होती है, बिना विल के बिक्वेस्ट होता है. ओके समझा. वेरी गुड. व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडिटर सर्टिफिकेट इन द रेमिटेंसेस ऑफ प्रोसेस? याद है एक जगह पे लिखा था ऑडिटर सर्टिफिकेट. ऑडिटर सर्टिफिकेट, नो लीगल केसेस इज पेंडिंग, नो लीगल इम्पीडियमेंट इज देयर. रेमिटेंसेस ऑफ एसेट्स में व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट? सर okay. The auditor's certificate is required to indicate the manner in which the remittable amount has been arrived, provide a statement of assets and liability of the applicant, confirm the disposal of the assets, confirm the fulfillment of all the liabilities, and confirm the repatriation of income from sources abroad. That is why auditor's certificate is required. The auditor's certificate is required to indicate the manner in which the remittable amount is arrived. कैसे आपको ये amount मिला? Okay, the assets and liability, confirm the disposable assets, confirm the fulfillment of liabilities and confirm the repatriable amount. इन सब के लिए remittances of assets में आपको auditor's certificate चाहिए. ठीक है? Okay, describe the documents which is required for remittance of assets and closure and winding up of branch or office. Anyone? Exactly. The documents required are the copy of Reserve Bank's permission for establishing the branch office, auditor certificate confirming that the applicants regarding the pending legal proceedings, and a report from the Registrar of Companies and the compliance system. तो अगर आप ये देते हो तो आप इंडिया के बाहर फंड्स रेमिट कर सकते हो. Is that clear? Everyone? Very good. Okay. What documents are required by Indian companies under the liquidation to make remittances? What documents are required for Indian companies to make remittances? Bus. Auditor certificate confirming that the liabilities are paid. Auditor certificate confirming that the assets, okay, confirming that the compliance with the Companies Act, and in case of voluntary winding up, auditor certificate confirming that no legal impediment or case is pending. So these are the documents required for companies under liquidation to make the remittances. पढ़ा है? Okay, very good, very good. Under what circumstances can NRI PIO remit the funds from NRO account? Under what circumstances can NRI PIO remit the funds from NRO accounts? Well, from the balances in the NRO account, sale proceeds of the assets which is acquired in the Indian by way of inheritance or legacy. याद है लास्ट में बताया था, अगर आप घर बेच के लेके जाते हो, मैंने जैसे बताया था आपके पापा के भाई इंडिया के बाहर रहते हैं और वो इंडिया आते हैं और इंडिया आके बोलते हैं अभी मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं घर बेच के लेके जाना चाहता हूँ. या उनको किसी के मरने के बाद एसेट्स मिलता है तो वो पैसा वो इंडिया के बाहर से लेके जा सकते हैं by selling of the assets, but not exceeding $1 million US per financial year. याद आया? देखो लिखा भी होगा उधर, लिखा है ना? Yes. What is the maximum amount NRIs and PIOs can remit per financial year? Yes, up to $1 million. Up to $1 million. Okay, what is a person of Indian origin? ये तो बताओ.
इस तरह के आंसर लिखोगे तो हो गया. A person resident outside India who is a citizen of any country other than Pakistan or Bangladesh. Okay, that is a person of Indian. Then what is the purpose of Section 8 of Foreign Exchange Management Act? What is the purpose of Section 8 of Foreign Exchange Management Act? नहीं. To require a person resident in India to make efforts to realize and repatriate an exchange as per the directions of Reserve Bank. To, ये पढ़ा भी हुआ है. To require the person resident in India to make efforts for repatriate, realize and repatriate foreign exchange. सर कहाँ पढ़ा है? Realization and repatriation of foreign exchange regulations. Realization and repatriation of foreign, surrender के पहले था. मैंने बोला था सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के उधर ऊपर देखो लिखा रहेगा. कुछ कुछ याद आया? ओके. लिखा है. यस. Describe the eligibility criteria for foreign national to remit assets outside India. Describe the eligibility criteria for a foreign national to remit the asset outside India. एक फॉरेन नेशनल है और इंडिया के बाहर एसेट्स बेचना चाहता है, क्या करेगा? क्या करेगा? सर नहीं आ रहा है ना, ये देखिए. A foreign national may remit outside India if they have retired from the employment in India, inherited the asset from a person referred in 6.5, or a non-resident widower inherited the asset deceased and the remittance should not exceed $1 million US. कुछ कुछ याद है? रेमिटेंसेस ऑफ एसेट्स में पढ़ा था. विडोवर, स्वामी की विडो, इनहेरिटेंस, और ये देखो लिखा होगा, सब पढ़ चुके हो रेमिटेंसेस ऑफ एसेट्स का पार्ट. एवरीवन क्लियर? याद रखना, a foreign national may remit outside India if they have retired from the employment in India, या inherited the asset from a person referred in section 6.5, or a non-resident widow inherited from the deceased Indian national spouse, and the remittance should not exceed $1 million US per financial year. Clear? दिमाग में रहेगा अभी? So that is the answer to this one. How much remittance of an asset is allowed per financial year for a foreign nationals? How much remittance is allowed per financial year? अभी तो पढ़ा. Yes. Foreign national is allowed to remit up to $1 million US per financial year, subject to the conditions and exceptions. Yes, वही था $1 million US. Clear? Define remittances of assets under the FEMA Act. What do you mean by remittance of assets? पैसा भेजना है कि पैसा आ रहा है? रेमिटेंस मतलब इंडिया के बाहर जा रहा है कि इंडिया के अंदर आ रहा है? इंडिया के अंदर आ रहा है तो हम लोग रिपैट्रिएट टू इंडिया बोलेंगे, और बाहर जा रहा है तो इस केस में रेमिटेंस ऑफ एसेट्स क्या हुआ? रेमिटेंस रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ डिपॉजिट विद अ bank, firm, company, provident fund, superannuation funds, insurance policy, sale proceeds of securities, or any other assets held in India in accordance with the provision of the Act. That is remittance. Remittance refers to transfer of funds outside India from a deposit with a bank, firm, company, or a provident fund balance, superannuation benefits, insurance policy, maturity proceeds, sale proceeds of shares, security, immovable property, or any other assets held in India in accordance with the provisions of FEMA. Okay? So, sir, ये है क्या?
सिंपल रेमिटेंस में जो हेडिंग्स हमने पढ़े थे उसी का समेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के, शेयर्स बेच के या जो भी कुछ बेच के अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया मस्ट सरेंडर रिसीव रियलाइज अनस्पेंड अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज? 180 days? परफेक्ट। चलिए देख लेते हैं। The resident individual in India must surrender, receive, realize, unspent foreign exchange, whether in the form of currency note, coins, traveler's check, to authorized person within 180 days of the date of receipt or realization or acquisition of assets. याद है? क्लियर है? कंसेप्ट्स सबको? वेरी गुड। Describe the requirement for surrendering the unspent foreign exchange required for foreign travel by the non-resident individuals. Describe the requirement for surrendering the unspent foreign exchange which was acquired for foreign travel by a non-resident individual in India. 90 days. Well, 180 days ही है. So the unspent balance for a foreign exchange which was acquired by the the unspent balance for a foreign exchange which was acquired for the foreign travel by a non-resident individual must be surrendered to an authorized person within 90 days from the date of its return and within 180 days in the form of traveler's check. Okay? याद है सरेंडर में पढ़ा था ये, सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वही चल रहा है। And what are the period of surrendering foreign exchange of certain person not being an individual resident? What is the period of surrendering foreign exchange in certain cases of a person not being an individual resident in India? 60 days? Well, correct. Within 60 days from the date of acquisition or purchase of the foreign exchange is not used for declared purpose or permissible purpose. So it has to be surrendered within 60 days from the date of acquisition of foreign exchange which is not used for declared purpose or any other purpose. Okay? Perfect. Very good. What is the period of surrendering realized foreign exchange for a person not being an individual resident in India? 7 days. Yes. तो आपका surrendering का part लगता है अच्छे से हुआ है. So within 7 days of the remuneration which is received within or within 90 days of all of the cases. So it is 7 days of remuneration received. बाकी सब cases में generally it is 90 days. Okay? Clear? And how can a person repatriate foreign exchange to India? How can a person repatriate foreign exchange to India? Sell it to an authorized person in India. Okay, fine. So they can sell it to the authorized person in India. Perfect. And retain and hold it in the account with the authorized dealer or use it for the discharge of any kind of debt liability denomination in foreign exchange. So they can sell it to the authorized person in India or they can retain and hold it in the account with an authorized dealer to use it and discharge for this purpose. Clear? Fine. Describe the duty of a person resident in India regarding the foreign exchange dues. Describe the duty of a person resident in India regarding the foreign exchange dues. क्या था duty? Exactly. They must take all the reasonable steps to realize and repatriate foreign exchange without delaying any receipt or making the case of receivables. They have to take all the steps to realize and repatriate without delaying the receipts or any step. Okay? And okay, so यहाँ पे set of series खत्म हो गया realization के हिसाब से, ठीक है? Now, next part series. Who can purchase residential immovable property in India under the long-term visa holder? LTV. अरे याद आया, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन जो वहाँ पे माइनॉरिटी में रहते हैं, हमने उनको इंडिया में रहने की परमिशन दी थी, रहने के लिए दिया था, उनको एलटीवी वीजा दिया था। नहीं याद नहीं? ओके चलो, कुछ पढ़ा नहीं है।
So citizen of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who are belonging to the minority committees like Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsis who have been granted a long-term visa holder by the central government. याद रखना LTV वीजा इन लोगों को दिया था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी कमिटी है लेकिन है वो इंडियंस, तो वहां पे जो छूट गए हैं, लेकिन बाय चांस अगर इंडिया आ जाते हैं तो हम उनको LTV वीजा देते हैं. Clear? Then what is the role of approving authority in export arrangement or deferred payment terms on a turnkey projects? What is the role of the approving authority in export arrangement or deferred payment terms on a turnkey projects? Exports of goods and services? नहीं याद है. Okay. The exporter must submit the proposal for prior approval of the approving authority, which will be considered the proposal in accordance with the guidelines of RBI. So अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर टर्न की प्रोजेक्ट्स लेता है तो याद है मैंने बोला था बिना अप्रूविंग अथॉरिटी के नहीं ले सकता. एग्जांपल हम लोग ने LNT का दिया था जब इंडिया के बाहर वो एक टर्न की प्रोजेक्ट ले रहा था, यानी बेल्जियम में रेलवे लाइन लेट डाउन करने का एग्जांपल लिया था. ओके, दैट वाज लार्सन एंड ट्यूब्रो एग्जांपल. देन what is the requirement for exports of services if none of the specified forms apply? What is the requirement of exports of services if none of the specified forms apply? That is called exports ka rules and regulations. And the requirement is if none of the specified forms apply, the exporter may export the services without furnishing any declaration, but they are liable to realize the amount due and repatriate. So अगर आपको कोई भी एक्सपोर्ट फॉर्म देना नहीं पड़ता, तो हमने ये भी पढ़ा था कि ठीक है अगर आपको एक्सपोर्ट फॉर्म नहीं देना पड़ता तो आप इंडिया में बिना फॉर्म डिक्लेरेशन देके भी एक्सपोर्ट्स कर सकते हो, बट यू हैव टू रियलाइज एंड रिपैट्रिएट द अमाउंट विद इन द टाइम गिवन. You have to realize and repatriate the amount within the time given to the RBI कि इतने टाइम में पैसा आ जाएगा. Is that clear? Then what should an exporter do if the full export value is not ascertainable at the time of export? What should an exporter do if the full export value is not ascertainable at the time of exports? Okay. So look at this. If the full export value is not ascertainable at that time, the exporter should declare the value which they expect to receive on the sale of goods and services. इसको हम लोग expected value बोलते थे. मैंने बोला भी था नीचे लिखते हुए कि अगर आपको full value of exports नहीं मिलता है तो आपको expected value पता करनी पड़ेगी. Okay, so remember, if the full export value is not ascertainable at the time of exports, the exporter should declare the value which they are likely to receive in case of overseas market. Is that clear? Everyone? ये exports of goods and services का है, due syllabus वाला. Then, describe the payment and process for full export value of goods exported. Describe the process for the full export value of goods. Okay, उस पे आंसर में याद रखना, the full export value of goods exported should be paid through authorized dealer in the manner which is specified in foreign exchange manner regulations. The full export value should be paid through authorized dealer in the manner which is stated in foreign exchange manner and receipt of payments. बराबर पढ़ा था वैसे? Yes. अच्छा, what are the purpose of declaration of exports? What is the purpose of declaration of exports? Yes. So the purpose of declaration of export is to give a true and correct material particulars of the goods and software being exported from India to a place outside India other than Nepal and Bhutan. The purpose of declaration of export is to give a true and correct material particulars of the goods and software to be exported from India to a place outside India other than Nepal or Bhutan. That is the purpose of declaration of exports. Clear? Okay, describe the declaration requirements of exports of goods or services. Describe the declaration requirements for exports of goods and services. Okay. So they have to furnish a declaration containing true and material particulars including the export value to the bank and authorities. They have to furnish a declaration containing the true and correct materials, particulars including export values to the Reserve Bank and other authorities. कि मेरा कितना गुड्स इंडिया के बाहर गया, कितना आने वाला है, कितना पैसा आएगा, वो पूरा particulars देना कंपलसरी है. ठीक है?
How can immovable property acquired by a person resident outside India be used for security or borrowing? How can immovable property acquired by a person resident outside India used for security for borrowing? नहीं याद? Well, it can be mortgaged to an authorized dealer. ये वाला एक्सपोर्ट से के बाद में वो था कि अगर कोई इंडिया के बाहर इंडिया में आके ब्रांच वगैरह एस्टेब्लिश करता है तो ब्रांच एक्वायर करने के बाद उसका वो मॉर्गेज भी कर सकता है. ओके, so how can the immovable property which is acquired by a person resident outside India be used as a security for borrowing? They can mortgage with the authorized dealer. ठीक है. Okay, what is the condition for sale of immovable property acquired by a person resident who has not acquired Indian citizenship? What is the condition for sale of immovable property acquired by a person who has not acquired Indian citizenship? अरे एलटीवी में पढ़ा था, याद है कुछ? The sale requires prior approval from Deputy Commissioner, Foreign Registration Office या Foreign Regional Office. FRO, FO, याद आया? LTV वीजा के अंदर याद आया? Then describe the process for acquiring immovable property in India by a foreign embassy, diplomat or consulate. Describe the process for acquiring immovable property in India by a foreign embassy, diplomat or consulate. और एक आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ओके, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था उसका. सो दे मस्ट ऑब्टेन द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड pay for the property using the funds which has been remitted from abroad through the normal banking channel. ये पढ़ाया भी था. They have to obtain the clearance from the government of India, Ministry of External Affairs, and pay from the funds through normal banking channels outside India. याद आया? Perfect. Okay, what are the requirement for a person resident outside India to acquire immovable property in India for carrying out permitted activity? What are the requirement for a person resident outside India to acquire immovable property in India for carrying out permitted activity? The answer was they must file a declaration with the Reserve Bank within 90 days of acquisition. They must file declaration with the Reserve Bank within. So if a person resident outside India wants to acquire immovable property, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये भी बोला था IPI फॉर्म फाइल करना पड़ता है. Immovable property acquisition in India फॉर्म 90 डेज के अंदर. ये सब बता चुका हूं. ठीक है, ये सब बता चुका हूं. यही तो दिखा रहा है कि प्रिपरेशन कहां पे अच्छी है और कहां पे नहीं है. ओके, इसलिए मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं. ओके, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस फॉर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर? What are the restrictions for the location of the property for a long term visa holder? Okay, the answer was the property should not be located in restricted or protected areas notified by central government or cantonment. मैंने बोला था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाहर प्रॉपर्टी नहीं ले. हो सकता है वो लोग सीक्रेट एजेंट हो, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के उधर कभी भी वो लोग को प्रॉपर्टी अलाउड नहीं करेंगे. ठीक है. How many residential immovable properties can long-term visa holder purchase in India? How many residential immovable properties can a long-term visa holder purchase in India? 2, 1, 3, 4. Well, a long-term visa holder can purchase one residential immovable property for self-occupation and one immovable property for self-employment. One residential property for self-occupation and one residential immovable property for self-employment. Got it? Clear? What does section 9 of the act contains exemption from? अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे वही है. जो ऊपर पढ़ रहे थे वही है. Application for provision relating to holding of foreign currency, realization and repatriation of assets. ये जो रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ एसेट्स वाला जो रूल देखा था, ओके, वही चीज सेक्शन 9 में कवर होती है. ओके,
द एप्लीकेशन फॉर द प्रोविजन रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रियलाइजेशन रिपेयर, तो जो ये जो रूल देखा था वही कवर होती है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना फेमा के, ओके, टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स सब अच्छे से करके जाना, नहीं तो फिर वो लगेगा ये बाकी था वो बाकी था ये बाकी था वो बाकी था, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको मालूम है फेमा आने ही वाला है, अनअवॉइडेबल है, ठीक है। देन what are the conditions for the spouses of NRI OCI to acquire property in India? What are the conditions for the spouse of an NRI OCI to acquire property in India? अरे समझाया था, प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड निक जोन्स प्रॉपर्टी लेता है क्या, तुम लोग को इतना भी है? तो इसमें कम से कम 2 साल से शादीशुदा होना चाहिए। So the marriage should be registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years preceding the acquisition, and the non-resident spouse should not be prohibited from acquisition. The marriage should be registered and subsisting for a continuous period of not less than 2 years preceding the acquisition, and the non-resident spouse should not be prohibited from acquisition. ठीक है? Then can spouse of an NRI OCI jointly acquire immovable property in India? Can they jointly acquire? Yes. चलो ये टॉपिक मतलब तुम्हारा ठीक है। A person resident outside India who is a spouse of NRI OCI can jointly acquire immovable property excluding agricultural land, farmhouses and plantations. So they can jointly acquire immovable property, okay, excluding agricultural land, farmhouse and plantations. याद आया, ये सब पढ़ चुके हो आप, ओके फाइन। व्हाट आर द पेमेंट ऑप्शंस फॉर एनआरआईज एंड ओसीआईज फॉर एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया? आरएफसी अकाउंट, यस, okay, so they can make the payment through inward remittances from any place outside India or by debit through NRE, FCNR or NRO account, but not by traveler's check or foreign currency notes. याद आया, मैं ये भी बोला था इंडिया में आके वो डॉलर निकाल के नहीं दे सकते और ये ला वॉशिंगटन, ओके, या अब्राहम लिंकन नहीं दिखाने का, हमारे उधर गांधी जी चलते हैं। So they can make payment through inward remittances from any place outside India by debit to NRE, FCNR or NRO account, but not by traveler's change of foreign currency. Clear? Everyone? Can NRI OCI acquire immovable property in India by inheritance? Okay? Yes, you are correct. They can acquire immovable property in India by inheritance from a person resident outside India or from a person resident in India. याद आया, अजय का बेटा वीरू, अजय इंडिया के बाहर गया, ओके, और उसके 2 बच्चे प्रतीक एंड कार्तिक, कार्तिक की वाइफ कृष्णा, नहीं, मैं पूरा एग्जाम्पल लिख के बताया था कैसे प्रॉपर्टी एक्वायर करते, नहीं याद है? ठीक है, देखना बाद में। How can NRI OCI acquire immovable property in India? By gift, authorization. Yeah. They can acquire immovable property by way of purchase or gift or excluding agricultural land, plantation and farmers. They can acquire immovable property by way of purchase, gift, excluding agricultural land, plantation. हाँ, मतलब खरीदने का है। They can purchase it from NRE, NRO, FCNR account use करते हुए। Okay? What is the definition of OCI? OCI का फुल फॉर्म तो बताओ। OCI, Overseas Citizens of India. Okay, yes. So overseas citizen of India is a person resident outside India who is registered as a OCI card holder under section 7A of the Citizenship Act. तो मैंने आपको बताया पिता कि आप इंडिया के बाहर चले गए, आप डेनमार्क के सिटीजन हो गए हो, वहीं पे रहते हो, शादी वादी कर ली है, अब आप इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया, अब दिल में फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया है, तो ऐसा लगता है यार इंडिया के अंदर कुछ तो लो, तो आप ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये भी बताया था, ऋषि सुनक ओसीआई कार्ड के लिए एप्लीकेशन करके ले चुका है, ओके, ऋषि सुनक की वाइफ
नारायण मूर्ति की बेटी, बराबर. He is a PM of United Kingdom. Clear? What is the definition of an NRI? NRI अभी अभी पढ़ा था. A non-resident Indian is a person who is resident outside India but who is a citizen of India. What are the limits specified for possession, retention of foreign currency and foreign coins? What are the limits specified for possession, retention of foreign currency and foreign coins? Authorized dealer can keep any foreign currency without any limits. However, you can retain, okay, only up to 2000 US dollar or equivalent. याद आया? 4 पर्पस के लिए $2000 रख सकते थे. एक डॉक्टर था जो इंडिया के बाद डेंटिस्टली ऑपरेशन करने गया था. फिर मैंने बताया था मैं जब लंदन गया था तब का केस क्या हुआ था, और मेरा कंजूस दोस्त खर्चा ही नहीं करता था, तो रीपेमेंट करने के वो पैसा वापस लेके आया. तो हम $2000 रख सकते हैं, बाकी का हमको सरेंडर करना पड़ता है, उतना अपने को रुपीस में मिल जाता है. बराबर. सो ऑथराइज्ड डीलर कैन पोजेस without any limit any foreign coins, or a person resident in India can retain the foreign currency or coins, any traveler's check not exceeding 2000 US dollar or its aggregate. Is that clear for everyone? Okay. Then what are the provisions relating to holding of foreign exchange, realization and repatriation not applicable to? What are the provisions relating to holding of foreign exchange, realization and repatriation not applicable to? नहीं मालूम? That is the person resident in India up to the limit specified by RBI, if acquired by way of gift or inheritance from a certain person mentioned above, or any income arising therefrom. So that is a provision relating to holding of foreign exchange, realization and repatriation. तो subject to the permission of RBI आप उतने लिमिट्स तक रख सकते हो. So the person resident in India आप 2000 US dollars तक रख सकते हो, if it is acquired by way of gift or inheritance or certain permissions as persons as mentioned above. Okay. What is exempted in relation to foreign exchange acquired or received before 8th of July 1947? What is exempted in relation to foreign exchange acquired or received before 8th of July 19? क्या था? What is exempted? Any income or accruing thereon which is held outside India in pursuance to the general permission. अगर 8 जुलाई 1947 से पहले अगर आपको इंडिया के बाहर कोई इनकम हुई थी, वो सब आरबीआई बोलता है एग्जेम्प्टेड है, उसे इंडिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. ये 8 जुलाई दो जगह आता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन और एक ये फॉरेन एक्सचेंज रिपैट्रिएशन में. सो एनी इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग देयरऑन व्हिच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया इन परसुएंस ऑफ जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई इज exempted in relation to foreign exchange acquired or received before 8th of July. Okay. Describe the possession of foreign currency coins by a person or class of persons. आप foreign currency coins कितना रख सकते हो? No limit. Perfect. It is not prohibited as specified by RBI. Perfect. No limit. Okay. याद है आपको बताया भी था, अगर आप इंडिया के बाहर से खूब सारे कॉइन्स यूके से दिराम विराम लेके आ रहे हो या दिनार लेके आ रहे हो, छोटे 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 लेके आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो, लेकिन फिर पॉइंट ये उठता है इतना सारा कॉइन्स कहां से मिला? वैसे वो कंट्री भी अलाउ नहीं करती इतना सारा कॉइन्स लेके जाने को. ओके. फाइन. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज persisting to repatriation, realization and long term visa holders. So other class of question, define directorate of enforcements. He can inspect the documents. What is Directorate of Enforcement? ED. Okay. Directorate of Enforcement is a body which is established by central government for enforcement of the act, which is a director or other officers.
डायरेक्टेड ईडी डिपार्टमेंट, मैं बोला भी था ईडी डिपार्टमेंट होता है जो सीबीआई डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होता है. इट इज नथिंग बट अ बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द central government for the enforcement of FEMA or other acts with the director or other officers. That is called Directorate of Enforcement. याद रहेगा? Okay. Who can apply for compounding to Reserve Bank? Who can apply for compounding to Reserve Bank? Compounding पढ़ा है ना? Any person who contravenes the provision of FEMA or related rules and regulations can apply, or directions thereon can apply. He's correct. Any person who contravenes the provision of FEMA, related rules, regulations, notification, directions and orders can apply. समझा? है लिखा है उधर, पढ़ के समझ में आना चाहिए. Okay. Which types of contraventions are not eligible for compounding by RBI? Which types of contravention are not eligible for compounding by RBI? ऐसा है, willful, malified and fraudulent transaction. याद है fugitive economic offenders पढ़ रहे हो तो उसमें आता है willful, malified and fraudulent transactions are not eligible for compounding. Okay. Then who has the power to compound the contravention under FEMA? RBI. Yes, correct. Reserve Bank of India has the power to control. Okay. What is compounding in the context of FEMA? What is compounding in the context of FEMA? Compounding का मतलब क्या होता है? Settle the matter. The process of voluntarily admitting a contravention, pleading guilty and seeking the redressal. Perfect. The process of voluntarily admitting a contravention, pleading guilty and seeking redressal is compounding. पढ़ा है? That is compounding. Clear? Everyone? Describe the liability of individuals in charge of a company for contravention under the Act. Describe the liability of individuals in charge of a company for contravention under the Act. Describe the liability of individuals in charge of a company in the contravention of the Act. नहीं याद होगा? ठीक है. They will be deemed guilty and liable to be proceeded against and punished unless they prove the lack of knowledge or adequate preventives. इसको बोलते हैं company liable, when company is liable. So they will be deemed guilty and liable to be proceeded against and punished unless they prove the lack of knowledge. मतलब मैंने एक बार बताया था, कंपनी सेक्रेटरी जो रहता है, अगर वो साबित कर दे कि सर मैं कंपनी के डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं था, मैं कंपनी के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, कंपनी का एमडी वगैरह ये लोग काम करते हैं, सो मुझे तो एडिक्वेट नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो बच सकता है, नहीं तो वो लायबल होगा. ओके. ये भी बताया था कंपनी सेक्रेटरी दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं जो सीएस, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, और एक तुम लोग जूनियर्स जो काम तो कर रहे हो लेकिन तुम्हें उतना ही पता है जितना काम दिया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं पता. ओके. व्हाट कैन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डू इन केस ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 13(1)? ठीक है, शायद ये याद नहीं होगा. They can confiscate the currency, security or property and bring back the foreign exchange holdings. What can adjudicating authority do for contravention of section 13(1)? ये वही है जहां पे विजय माल्या और नीरव मोदी के केस में कर रहे हैं. They can confiscate the currency, security and property and bring back the foreign exchange holdings. Okay. Then, who can file the complaint for an offense under section 31(c)? RBI. Company. Okay. An officer not below the rank of assistant director. An officer not below the rank of assistant director can file a complaint for an offense under section 13 subsection 1(c). Okay. That is enforcement directorate का provision. अच्छा, what is the punishment for acquiring foreign exchange exceeding the prescribed threshold limit? Anyone guess? Any guesses? No? Pass. It is imprisonment up to 5 years and fine.
So if you are holding foreign exchange beyond limit, it is imprisonment up to 5 years and fine. ओके सो काफी सारे कंसेप्ट्स थोड़े नए नए भी लग रहे होंगे एकदम से सर ये है थोड़ा वो ओल्ड एंड न्यू को उसका मर्जिंग है ना इसकी वजह से देन under what circumstances can the adjudicating authority recommend prosecution? Under what circumstances can the adjudicating authority recommend prosecution? जहां पर if the adjudicating authority deems it may recommend a prosecution under subsection 1 of 13A if the directorate of SO is satisfied that a criminal complaint may be filed against a guilty person. So ED has to file a criminal complaint. That time he will recommend a prosecution. Prosecution criminal complaints में आता है. बाकी सब complaints में हम लोग plaint या word file करते हैं civil remedies के लिए. Describe the penalty for acquiring a foreign exchange and foreign security or immovable property exceeding the prescribed threshold limits. Describe the penalty for acquiring foreign exchange, foreign security or immovable property exceeding the prescribed threshold limits. Well, the penalty can be 3 times the sum involved in contravention or equivalent assets that can be confiscated. ये वाला पार्ट भी हमने एक्चुअली देखा है 3 times involved होता है 3 times the sum involved in contravention and equivalent of the assets which is situated in India can be confiscated. ओके ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था विजय माल्या नीरव मोदी के केस में कि उसका एसेट्स तो ले ही लेंगे इंडिया का और ले चुके हैं प्लस उसके ऊपर ये पेनल्टी अलग से लगती है ठीक है अच्छा व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ठीक है ये तो सिंपल है द पेनल्टी कैन बी 3 times the sum involved in contravention if it is quantifiable or 2 lakhs rupees if it is non quantifiable याद है quantifiable non quantifiable भी करके समझाया था Okay, and for a continuing contravention, additional penalty of 5,000 rupees per day can be imposed. Okay, आप चाहिए तो penalty में जाके देखना provision quantifiable 3 times, non quantifiable 2 lakhs lump sum और फिर नॉन क्वांटिफाइबल क्या होता है वो भी समझाया था कि इंडिया के बाहर से आप आ रहे हो ये एंटीक्स वगैरह लेके आ रहे हो पकड़ में आया तो So, the penalty can be 3 times the sum involved in contravention or 2 lakhs rupees for continuing offense, okay, or up to 5,000 can be imposed. Okay. What does section 37 of the Act empower to Directorate of Enforcement to do? Exactly. Directorate of empowers Assistant Director to carry out investigation into the contravention. Perfect. Okay, the Directorate of Enforcement and other officers not below the rank of Assistant Director can investigate into the contravention. Clear? Who can central government authorize to exercise the power of Director of Enforcement? Who can central government authorize to exercise the power of Director of Enforcement? Perfect. The central government can authorize the officers of Customs, Central Excise, Police, State officers to exercise the power of Directorate of Enforcement. They can authorize any kind of customs, central excise, police or state government officers to do the power of enforcement act. Who is authorized person under the FEMA? अभी ये तो आता ही होगा. ये तो आता ही होगा. Who is authorized person under the FEMA? Authorized person means person who is dealer of money changer or offshore banking units or any person authorized to deal in foreign security. अभी ऊपर पढ़ा ही था. ठीक है? What is the time limit of filing an appeal to the High Court against the decision of the tribunal? What is the time limit of filing an appeal to the High Court against the decision? 60 था? ये 65? 60 था? Well, the appeal must be filed within 60 days from the date of communication of the decision. 90 days, oh, extension रहेगा. Condonation of delay application करके आगे जा सकते हो. Okay? और appellate tribunal में जाने के लिए 45 days था. ठीक है? How can appellate tribunal examine the legality of an order which is made by adjudicating authority?
how can appellate tribunal examine the legality of the order? ये order बराबर बना है कि नहीं? Well, simple. The appellate tribunal can call for records of the proceeding and make the order resident. The appellate tribunal can call for records and make the proceeding. The appellate tribunal can examine the legality in this fashion. कि क्या हुआ है उसके सारे पेपर्स दो और फिर वो चेक करती है कि बराबर से हुआ है कि नहीं. ठीक है? Describe the time frame for disposing an appeal filed in appellate tribunal. ये तो पता होगा कितना टाइम था? 180. Well, yes. Appellate tribunal may endeavor to dispose the appeal within 180 days from the date of receipt. If it cannot do so, it must provide reasons for the delay. Okay, so the period is 180 days, and if it cannot do so, it has to provide the reasons for the delay. Is that clear? Clear, very good. What does section 19 subsection 4 of the act states? Special Director Appeals के बारे में state. Well, ठीक है, आपका sections थोड़ा weak है. Appellate tribunal must send a copy of every order to the parties to the appeal and concerned adjudicating authority or special director. That is what it is said. याद एक कॉपी हम सबको भेजनी पड़ती है जहां पे आपने अपील लिखा होगा पढ़ा होगा उसके ठीक नीचे लिखा होगा a copy has to be send a copy of every order to the party concerned and this that is stated in section 19 subsection 4. Okay, section वैसे भी आपका वीक है तो जाने दो. Describe the role of appellate tribunal under the act. What is the role of appellate tribunal under the act? The appellate tribunal established under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act is the appellate tribunal for this and it exercises the jurisdiction, power and authority conferred under the act. याद है smugglers, foreign exchange manipulators वाला है. Very good. The appellate tribunal established under Smugglers, Foreign Exchange Manipulation Forfeitures of Act 1976 is the appellate tribunal and exercises the jurisdiction, powers and authority of the act. What is the time limit for filing an appeal to the Special Director Appeals against the order of the adjudicating authority? Perfect, 45 days. The appeal has to be filed in 45 days from the date of the receipt of the order of the aggrieved person. Perfect, very good. Who can make a complaint to initiate inquiry under section 13? The officer authorized by or special order by the central government can make a written complaint. The officer authorized by general or special order by the central government can make a complaint. They are the one. Okay? Describe the process of appointment of adjudicating authority. चलो कोई नहीं. Central government appoints the adjudicating authority through the notification in the official gazette. The jurisdiction of the adjudicating authority is specified by the central government. Central government appoints the adjudicating authority through the notification in the official gazette and the jurisdiction is specified by the adjudicating authority. Clear? Then, what is the duty of every authorized person when an inspection is initiated by Reserve Bank? That I understand नहीं आएगा, ठीक है. So that is to produce books of accounts and other documents in their custody and furnish the statement and information as directed. What is the duty of every authorized person? They have to produce the books of accounts, documents in their custody and furnish them. ये जनरल है, ये तो आपने कई जगह पे पढ़ा है कि they can call for books, documents, records. याद आया? Then, how can RBI revoke the authorization granted to an authorized person? Okay. RBI can revoke the authorization granted to the authorized person at any time in public interest or if the authorized person fails to comply with the condition of the contravention conditions or contravention of any of the provisions of the act. So अगर वो contravention करता है या public interest के against काम करता है तो उसका license revoke हो सकता है. Okay, clear? And define the authorized dealer under the FEMA. इसलिए वो बार बार वो क्वेश्चन डाल के रखा है ताकि वो ऐसा लगे अभी तो पढ़ा था. Okay, authorized dealer is any person specifically authorized by RBI under section 10(1) for foreign exchange of foreign securities.
So what are the powers of RBI in suing and direction of an to authorized person? What are the powers of RBI in issuing directions to the authorized person? नहीं याद. The powers in issuing directions are specified in section 11 of the Act. Simple. Describe the procedure for appointment of authorized persons. The procedure is stated in section 10. That authorized person will be appointed as offshore banking unit, money changer, वगैरह, that will be decided by RBI, and RBI will be giving them license to deal in money. ये सब चीजें हमने पढ़ चुके हैं. Okay, so ये कुछ questions थे pertaining to authorized persons and other things. So last part of FEMA, न्यू कोर्स में RBI साथ में ही है, तो थोड़ा बहुत RBI का, ओल्ड कोर्स में RBI चैप्टर 1 अलग से है, तो ठीक है, that can be taken. So यहाँ पर completing that part. So describe the powers of Reserve Bank of India under section 11 of the FEMA Act. अभी पढ़ा था सर. Yes. The power of Reserve Bank under 11 in FEMA is to issue the direction to the authorized person regarding the making of payment and doing away with the act to this. Yes. Acha, what is Reserve Bank of India's, when was Reserve Bank established and what are the basic functions? 1934. Or what are the functions? Reserve Bank was established on 1st April 1935. Its basic function is in the preamble that is to regulate the issue of banknotes, keeping the reserves with a view of securing the monetary stability and generally to operate as a currency and credit system of the country to take the advantage. ये उसका preamble है. ये आपने preamble देखा भी होगा, लिखा भी हुआ है ना? Okay, notes में भी मिलेगा आपको. So, Reserve Bank of India was established on 1st April 1935. Its basic function is to regulate the issue of banknotes, keep the reserves, and generally to operate as a currency of this. Okay? Acha, who appoints Central Board of Directors of Reserve Bank of India? Central government. Central Board of Directors of Reserve Bank is appointed by the Government of India, keeping with the RBI Act. Perfect. What is the composition of Central Board of Directors of Reserve Bank of India? What is the composition? अरे गवर्नर बैठता है, साथ में ये बैठते हैं, गवर्नमेंट के इतने नॉमिनीज, ये याद है? ये देखो, Central Board of Reserve Bank shall fulfill the officials such as governor, deputy governor, as well as non-official director nominated by the government and directors of 4 local boards. याद है, ऐसा बताया था. यहाँ पे गवर्नर बैठता है, यहाँ पे 4 लोकल बोर्ड्स के, और यहाँ पे ये अलग अलग नॉमिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोग बैठते हैं. टोटल मिला के 12 जन उसके और इसके मिला के ऐसे. So central government consists of full-time officials such as governor, deputy governor, as well as the non-officials which is nominated and directions from the 4 local boards. ठीक है? Describe the organizational structure of Reserve Bank of India. Organizational structure. Reserve Bank includes Central Board of Directors, which is headed by Governor. अभी अपना गवर्नर पता होगा, शक्तिकांता दास. Okay, which is headed by Governor. Consists of Deputy Governor, Executive Director, Principal Chief Secretary, Chief Manager, General Manager, Deputy General Manager. अगर आपने बुक में देखा होगा तो बुक में ऐसा लिखा होगा, एक के नीचे एक, फ्लो में. बराबर है? उसमें नहीं है? अच्छा, डेफिनेटली होगा. ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने नोट्स में डाल दिए थे, और ओल्ड नहीं, न्यू में भी है. सो मिलेगा, उसमें है? यस. अच्छा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन
ये न्यू वाले में मिलेगा. डिस्क्राइब द रोल फॉर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. नहीं मालूम. चलो. The BFS is responsible for undertaking consolidated supervision of the financial sector, including banks and financial institutions and non-banking finance companies. That is called Board for Supervision. ये देखता है कि इंडिया के जो भी फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह क्या काम कर रहे हैं और ये अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सबमिट करता है. ओके. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएफएस? ये भी अगर न्यू कोर्स के हिसाब से. The primary objective is to ensure the stability and soundness of the financial sector. The primary objective is to ensure the soundness of the financial sector. Okay. Define the role of Reserve Bank of India as a monetary authority. चलो ये तो बताओ. Yes, correct. Reserve Bank formulates and implements and monitors the monetary policy of India with the objective of maintaining the price stability and promoting economic growth. With the objective of maintaining price stability and economic growth. What are the main functions of Reserve Bank of India? Yes. That is, the main function is to include monetary authority, regulate, supervise the financial system, and manager of the foreign exchange. Is that clear? That is the main function. Describe the role of Reserve Bank as a regulator and supervisory of the financial system. Exactly. Reserve Bank sets a broad parameters for banking operations in India with the objective of maintaining a public confidence, protecting depositors' interest, and providing cost-effective banking systems to the public. Perfect. ये आपको नोट्स में मिलेगा सब पैरामीटर्स के हिसाब से. Okay. What describe the objective of issuer of currency in India? Describe the objective of the issuer of currency in India. What is the objective? Exactly. The objective is to give public an adequate quantity of supplies and currency notes and coins in good quality. Adequate quantity of supplies and currency notes in good quantity. What is the role of Reserve Bank of India in payment and settlement systems? Exactly. ये भी मिलेगा. The Reserve Bank introduces upgrades a safe and efficient mode of payment system in India. ये सब मैंने आपको बताया था. Paytm, PhonePe, Google Pay, ये सब उसमें आता है. So they introduce safe, efficient mode of payment system to meet the requirement of public at large. Its objective is to maintain a public confidence in the payment system. Its objective is to meet a public confidence in the payment system. So they introduce and upgrade the safe, efficient mode of payment system in India. तो फोन पे वगैरह ये सब इसके payment and settlement systems में cover होते हैं. What are the related functions of Reserve Bank? Perfect. Reserve Bank acts as a banker to the government. They perform merchant banking functions, central government functions. It acts as a bankers to the bank and maintain the accounts. So ये सब आपको notes में मिलते जाएंगे एक के पीछे एक. Okay. It acts as a bankers to the government performing the merchant banking functions, and it also acts as a banker to maintaining the safe banking accounts. Okay. Define the developmental role of Reserve Bank of India. What are the developmental rules? Yes. Reserve Bank of India performs a wide range of roles to support the national objectives. Okay. Fine. So with this, FEMA part is over. With this, FEMA part is over. अभी FCRA का रिवीजन देखते हैं. Okay. So FCRA के provisions. Let's see and understand that. Describe the purpose of Foreign Contribution Regulation Act. Describe the purpose of Foreign Contribution Regulation Act. What is the purpose? हाँ, donations वगैरह वगैरह वगैरह. ये है. The act is erected to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or hospitality to ensure that various organizations and individuals that function in line with the values of democratic republic. ये उसके preamble में दिया हुआ है. The act is regulated to accept the utilization of foreign contribution or hospitality to ensure that various organizations and individuals they function in line with the values and democratic principles. Okay. What significant developments led to the amendment of Foreign Contribution Act in 1984?
वेल वो यहाँ पे नहीं मिलेगा नोट्स में, वो मॉड्यूल में था, वो मॉड्यूल में था। एनीवन? नहीं, चलो बता देता हूँ। There was changes in the internal security, increased influence of the voluntary organization, spread of communication technology, and rise in the amount of foreign contribution. तो ये था 1984 का फेज, जब इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना ज्यादा शुरू हो गया था। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो गए थे, कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ते जा रहे थे, नया लेवल बढ़ रहा था, तो एफसीआरए को अमेंड करना जरूरी पड़ गया था। ओके, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी अमेंडमेंट। What did Foreign Contribution Regulation Act came into, oh sorry, when did they came into effect? Date बताओ, डेट बताओ। ये भी मॉड्यूल में मिल जाएगा। 2010। 1 मई 2011 था। 1 मई 2011, 2010 में ये एक्ट बना और 2011 से पिक्चर में आया। अच्छा, डिफाइन द पर्पस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब पर्पस तो बताओ, व्हाट इज द पर्पस? To regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by individual association and companies and prohibit any activities which is detrimental to national interest. ये सब आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, स्टडी के पार्ट्स, ठीक है। देन व्हाट डिड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट इन नोले हैपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? अगेन मॉड्यूल में केस स्टडी दिया हुआ है, नहीं मालूम होगा। सिंपल सा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज लाइक अ ग्रेटिफाइंग इंटॉक्सिकेंट विद अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बट इट मस्ट बी कंज्यूम मॉडरेटली एंड डिस्क्रीटली फॉर द लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या, बिना किसी कंसिडरेशन के पैसा आ रहा है, तो ये लगता है आन दे, ये ग्रेटिफाइंग है, ये लगता है और आने दे, लेकिन याद रखना जरूरत से ज्यादा दवाई भी बीमारी कर जाती है। तो हमें इसीलिए लॉ बनाना जरूरी है ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन अपनी जगह स्टे ऑर्डर की तरह बना रहे, कि उससे ज्यादा नहीं, एक लिमिट बिठाना जरूरी था, ठीक है। ये सब मैंने मॉडल से लिए थे। एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010? 2010। चलो, वेरी गुड सर। The provision is to enhance the accountability and receipt of utilization of foreign contribution. अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये आपको नोट से मिलना शुरू हो जाएगा। टू एनहेंस द अकाउंटेबिलिटी एंड रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? चलो अभी ये तो तुम ही बता सकते हैं। So foreign contribution refers to donations, delivery, transfers, which is made by any foreign source, including articles, currency, and security as defined in the Act. Perfect? Clear? याद रखना, foreign contribution is refers to the donation, delivery, or transfer which is made by any foreign source, including the articles, currency, and security as defined in the Act. ठीक है? What does the term foreign source include? ये भी पता होगा। Monetary funds, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है, मैंने शॉर्ट में लिखा है वैसे। फॉरेन सोर्स इंक्लूड एनी काइंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसी एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जिससे भी इंडिया के बाहर से पैसा आ सकता है, इंक्लूडिंग इंडियन कंपनी जिसका 50% से ज्यादा कैपिटल बाहर वालों के पास है, वो सब फॉरेन सोर्स है। क्लियर? डिफाइन फॉरेन सिक्योरिटी एफसीआरए में, मॉड्यूल में मिल जाएगा। फॉरेन सिक्योरिटी अंडर द एफसीआरए। है मॉड्यूल में। चलो फेमा में भी पड़ा हुआ है वैसे। ओके, foreign security as defined refers to any security as referred to Security Contract Regulation Act and also include foreign security as defined in the FEMA. ये आपको FCRA में भी मिलेगा, प्लस FEMA में भी मिल सकता है। So foreign security as defined means any security as stated in SCRA, Security Contract Regulations Act, and includes a foreign security as defined in FEMA. ठीक है?
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू इंटरेस्ट इनकम. इसके लिए क्या करने का? इफ यू आर रिसीविंग interest and income, foreign contribution. Well, according to the Act, the interest which is accrued on a foreign contribution will be deposited in a bank as well as any other income derived from the foreign contribution is considered as a foreign. एक बच्चे ने क्वेरी भी पूछी थी, उसका रिप्लाई भी मैंने दिया था कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट बनता है, क्योंकि आप बैंकों में रखोगे तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट बनता है. तो यस, एनी इनकम इंटरेस्ट ऑन अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन व्हिच इज डिपॉजिटेड एज वेल एज एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम फॉरेन इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन. ये दिखा भी हुआ है नोट्स में, बाय द वे. ओके, देन प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज पर द एक्ट. दो कोई भी एग्जांपल. Let's say a company based in the United States is transferring 20,000 as a donation to the company in India, would be considered as a foreign contribution. कोई भी एग्जांपल देना था, कुछ भी दे सकते हो. Okay, it has to be donation or delivery. अच्छा, describe a foreign company. Foreign contribution can come from foreign company. What is a foreign company? ये आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा. A foreign company is a company or association incorporated outside India. वैसे ये आपको setting up a business वगैरह में भी मिल जाएगा कि वहां पे भी foreign company का definition आता है. Okay, it includes a foreign company within section, पुराना section था 591 of Companies Act, and a subsidiary of a foreign company, the registered office of the principal place of business of a foreign company and a multinational corporation. तो फॉरेन कंपनी खुद भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी के ब्रांचेस या प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकते हैं, वो भी फॉरेन कंपनी ट्रीट की जाएगी. सो फॉरेन कंपनी कैन बी अ कंपनी और एसोसिएशन आउटसाइड इंडिया. इट इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट. It includes any subsidiary of a foreign company. It includes any registered office or principal base of business of a foreign company. It includes any multinational corporation also. Okay, ये मॉड्यूल में मिल जाएगा आपको. What is the definition of multinational corporation then? ये भी अगेन मॉड्यूल में मिल जाएगा. Well, a multinational corporation refers to a company that operates in multiple countries and has a presence in different parts of the world. ये तो जनरलिटी पे डिफाइन करते तो भी हो जाता. The multinational corporation refers to a company that operates in multiple countries and has presence in different parts of the world. That is MNC. Okay. How can a person receive a foreign contribution? So a person can receive a foreign contribution if they have definite culture, economic, educational, religious, social program. They must also contain FCRA registration number from the central government and must not be prohibited in section 3. कुछ याद आया? डॉन बॉस्को का एग्जाम्पल लिया. So they must have a cultural, economic, educational, religious, and social program. They must contain FCRA registration and permission, and they must not be prohibited in section 3 of the Act. Okay. Define the term person in context of foreign contribution. वही है. अच्छा. Well, person means an individual, HUF, association. Yes, वही है. Perfect. Or a company. ठीक है, तो ये हो गया बिगनिंग के पार्ट वाला कुछ क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चंस, बट दिस टाइम थोड़ा इन डेप्थ वाले. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटरटेन अ रिप्रेजेंटेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days. Sufficient cause, yes. So if the organization was prevented by sufficient cause from making the representation 30 days, central government may entertain the representation thereafter. Perfect बोला. Okay. अच्छा, define the term political interest. ये मॉडल में मिल जाएगा, ये उसमें भी मिलेगा नोट्स में. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर वगैरह. डिफाइन.
Yes. Political interest refers to active politics or party politics. Okay. आजकल बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, so that refers to active politics or party politics. How does the act prevent the foreign funds from influencing administration? इसके लिए क्या बोलूं? आधे से ज्यादा चीजें तो अपने को समझ में नहीं आती है. well, ऐसा है कि by prohibiting organization of political nature from receiving the funds, कि political organizations इंडिया में funds receive नहीं कर सकते. So how does the act prevents the foreign funds from influencing the administration? This way, they will not influence the administration. Okay? Do organization with avowed political objectives have to access foreign funds? जैसे RSS, ये थे, मैंने बताया था ना कुछ एक RSS होते हैं. So can they have the access to foreign funds? Well, no. The organization with avowed political cannot access. या जो कट्टरपंथी होते हैं, मतलब I am only for this belief or that belief, do they have the access to foreign funds? No. ठीक है? Then describe the guidelines for declaring an organization of political nature. ये है नोट्स में, जाके चेक करो. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है. So organization actively involved in politics, associated with political parties, can be declared as organization of political nature. Okay, only organization actively involved in politics or associated can be described as organization of political nature. Now, what are the purpose of section 3, subsection 1 and section 5 of the Act? ऊपर वाला. To prevent foreign contribution routed through voluntary organization not connected to political parties. क्योंकि political parties अगर directly funds नहीं लेती तो क्या करती है, घुमा के लेती है. बराबर, तो ये घुमा के फंड नहीं लेने का है. So to prevent the foreign contribution routed through voluntary organizations not connected to political parties. समझा? Define political parties. अभी तो पढ़ा था. Okay, so political party is an association or body of individuals, citizens that is registered with the Election Commission of India and set up the candidates for election of the legislature. तो EC के साथ registered हो तो ही आप political party बनते हो. Remember, you can have political agenda, but you are not a political party unless you are registered with EC. Okay, तो याद रखना. और एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कई लोग पॉलिटिकल पार्टी होते हैं लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स नहीं लेते तो उनका पॉलिटिकल पार्टी का एम्बलम और पार्टी का नाम चला जाता है. करेक्ट? अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिलते तो, समझा? तो ऐसे बीच में कई सारे जब इलेक्शंस आते हैं तो खड़े हो जाते हैं अपना अपना बैनर लेके, नया नाम लेके, इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर आपको मिनिमम वोट्स नहीं मिले तो आप फेल हो गए. हाँ, उस इलेक्शन आपका नाम और एम्बलम गया, अब आपको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वापस से रजिस्टर करना होगा. मिनिमम वोट चाहिए. Now what happens if no order is made within the period of 120 days? Well, if no order is made within 120 days, then central government must make an order within 60 days from the expiry of 120 days after recording reasons. ये आपको मिलेगा in terms of order to be made by the central government. Then, within what time period should the central government make an order under subsection 1? Again, political parties ka. The order should be made within a period of 120 days, okay, of the issue of the notice. How does central government make an order under subsection 1 after considering the representation of reports? तो जो भी person आते हैं FCRA के हिसाब से, well, the central government specify the organizations of a political nature to make the order. ये सब पूरा पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा. नाउ डज सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 स्टेट द रिप्रेजेंटेशन टू बी मेड इन सबसेक्शन 3? ये भी अगेन मॉड्यूल में मिल जाएगा. वेल, द आंसर इज it allows the central government to forward the representation to any authority if it considers to be appropriate. Okay.
डिस्क्राइब हु कैनॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन. चलो यहां से अब आपको सारे नोट से मिलने शुरू हो जाएगा. हु कैनॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन? करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, yes. The candidates standing for election or any representation of correspondent, columnists, editors, printers, publishers, registered newspapers, judges, government servants, okay, or employees of the government control bodies, or any legislature, political parties, or office bearers of the nature specified by the central government or association companies in broadcasting news, current affairs, programs of electronic media and modes. पूरा वो लिस्ट है ना, वो पूरा पूरा ठीक है. अच्छा, how long does an organization have to make a representation against being specified as an organization of political nature? How long does an organization have to make a representation against being specified कि मैं political nature नहीं हूँ? Well, as per Section 5, the period of 30 days to make a representation to the central government providing the reasons that I am not a political organization. बिकॉज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग बहुत चलता है, इसलिए ये एक्ट बार बार पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रोकता है इंडिया के बाहर से फंड्स लेने के लिए. अच्छा, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर नोटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर? ये हमने किया था, वही है, आपके नोट्स में लिखा भी होगा. Central government, as per Section 5, specify the organization as an organization of political nature by publishing an order in the official gazette, making an order, and the government must give a written notice to the organization informing them of the grounds which they propose to be specified. Okay, so in short, central government आपको clearly बताएगा कि you are an organization of a political nature और ये रिटर्न नोटिस आएगा, और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का डिक्लेयर हो गया तो कोई भी फंडिंग्स आपको नहीं मिल सकती. ओके, डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर एज पर द एक्ट. ये आपने ऊपर देखा ही था. ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट इन्वॉल्व इन प्रोपोगेटिंग आइडियोलॉजी इन एसोसिएट. ये पहले भी बोला था, पॉलिटिकल पार्टी अलग है. पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन ले सकती है इलेक्टोरल ट्रस्ट के हिसाब से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर अलग है, जो आइडियोलॉजी एसोसिएटेड, मतलब हम हड़ताल करेंगे, हम जेएनयू जाएंगे, हम ये करेंगे, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो गवर्नमेंट उनको फंड्स लेने से रोक सकती है. बीच में हुए थे कई सारे हड़ताल हो गए थे, जेएनयू में ये झगड़े हो गए थे, वो सब चीजों के टाइम पे फंडिंग रोक दी थी. अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय इंडिविजुअल्स? चलिए ये तो बताओ 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 बताओ. यस 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 प्रणव. What are the different ways in which foreign contribution can be accepted by organization? अरे सिंपल था. The foreign contribution can be accepted as salary, wages, payment in the ordinary course of trade, some exception to Section 3, or an agent of a foreign source, okay, or a gift or representation in accordance with the government, or from the relatives, or from the authorized channel of scholarship and stipend. पढ़ा तो था. So that way you can accept it. पर ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, ये नहीं सोचा था. Okay, describe the person to whom Section 3 does not apply. ये जो आपने पढ़ा, Section 4 specifies the acceptance of foreign contribution by certain individuals who's receiving salary, wages, international trade, commerce को Section 3 apply नहीं होगा. Section 3 restricted है, Section 4 allowed है. बराबर. Describe the restrictions imposed by Section 3, subsection 3 regarding the delivery of currency from foreign source. Delivery of currency by foreign source. What do you think? याद है.
So, according to section 3, subsection 3, no person receiving currency from the foreign source on behalf of the person or class of person mentioned in section 9 shall deliver the currency to a person other than the intended person if they know and have reasonable cause to believe that the recipient intends to deliver the currency to someone else. Okay? So, ये मॉड्यूल में था, वहां से लिया था. इसका मतलब अगर आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है और वो फॉरेन करेंसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो उसी को देनी है, किसी और को नहीं. कुछ एग्जाम्पल में ऐसे भी लिए थे, जैसे कई लोग इंडिया के बाहर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चुपचाप करेंसी छुपा के चले जाते हैं, तो वो इलीगल ट्रांसमिशन ऑफ करेंसी हो जाता है. Okay, so according to section 3, no person receiving a currency from the foreign source shall deliver the currency other than the purpose to which it is received. इसलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो जैसे डॉन बॉस्को को मिल रहा था, तो सेंट पीटर्स चर्च उसको यूज नहीं कर सकता. बराबर. Then, how does section 3 subsection 2 regulate the delivery of currency accepted from the foreign source? How does it regulate? It prohibits a person resident in India from delivering a currency where the Indian or a foreign has accepted from the foreign source or another person if they know or have reasonable cause to believe that the recipient intends to deliver the currency to the political party. क्योंकि सेक्शन 3 का डर यही है कि कोई तो पॉलिटिकल पार्टी को दे के आएगा. इसने पैसा लिया, वैलिडली लिया, लेकिन चुपके से जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे के आ रहा है. तो इसलिए सेक्शन 3 prohibits any person and resident from delivering the currency or foreign currency to the political party or any connected source. ओके, क्योंकि इंडिया के बाहर से फंडिंग, ये एक्ट को बनाने का पर्पस वही था कि इंडिया के बाहर से गलत फंडिंग जो चल रही है वो रोके. गॉट इट? एंड डिफाइन अ पब्लिक सर्वेंट. व्हाट इज द पब्लिक सर्वेंट? जज, political party. Public servant under section 21 of Indian Penal Code is a person holding a public office or employed by the government. जैसे police officer वगैरह. So a person holding a public office or employed by the government. Okay? Fine. Does section 3 subsection 2 clause A state about foreign contribution? What does section 3 state about foreign contribution? Well, ठीक है, अगर याद है तो ठीक है. No resident outside India or a citizen of Indian outside shall accept the foreign contribution from any political party or any person mentioned. पूरा सेक्शन 3 उसी के ऊपर ध्यान है. That is, कौन लोग रिस्ट्रिक्टेड है, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज और या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. पूरा सेक्शन 3 उसी पे फोकस करता है. तो जब भी सेक्शन 3 आएगा, दो बातें याद रखना. एक तो जजेस, ये लोग सब रिस्ट्रिक्टेड है, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है. ठीक है, फाइन. अभी इसके आगे वाला सेक्शन देखते हैं. सो लेट्स सी सम अदर सेक्शंस. What are the grounds on which the central government can prohibit acceptance of foreign contribution or foreign hospitality? ये अब आ गया अलग. ये तो अब आपके सारे नोट्स में भर भर के दिया हुआ है. बताओ. Exactly. The grounds on which the central government can prohibit, that is integrity, sovereignty of India, public interest, freedom and fairness of election, friendly relationship, harmony between states, racial. सर ये कहाँ पे दिया है? ये अपने मॉड्यूल में भी दिया होगा. मिला मॉड्यूल में. Describe the conditions for an Indian recipient organization or a foreign donor having a common members to obtain FCRA permission. Describe the condition for Indian recipient or organization of a foreign donor having common members to obtain FCRA permission. मतलब मेरे भी वहाँ पे डायरेक्टर्स है, आपके उधर भी डायरेक्टर्स है, कॉमन डायरेक्टर्स है. तो अभी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो बिल्कुल कुछ ऐसी चीजें थी. द चीफ फंक्शनरी of the recipient Indian organization should not be the part of the donor organization
At least 75% of the office bearers from the governing body of the Indian recipient organization should not be the members of the foreign donor organization. In case a single foreign donor, then at least 75% of the members of the foreign government should not be the family members and close relative. ये आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, मॉड्यूल में देखना मिल जाएगा. How can an organization in a formative stage apply for FCRA? जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, फॉर्म हो रही है, वो एफसीआरए के लिए कैसे अप्लाई करें? सिंपल है, दे कैन अप्लाई फॉर प्रायर परमिशंस. मैंने बोला था ना, 3 साल तक अगर आप नहीं एस्टेब्लिश हो तो आपको प्रायर परमिशंस मिलती है. ठीक है, डिफाइन प्रायर परमिशंस. चलो, व्हाट आर द प्रायर परमिशंस? What is a prior permission? नहीं. Prior permission is granted for the receipt of a specific amount for the specific donors carrying out or specific activities. So it is given for the specific amount for the specific donors for specific activities. That's called prior permissions. What assets can an association include in its capital investment of FCRA activities? What assets can association include in the capital investment of FCRA activities? Land, building, permanent structures, vehicles and equipments. Again, coming from module. Describe the eligibility criteria for grant of prior permissions. An organization should be registered under the existing statute. They have to submit a commitment letter from the donor and meet the certain conditions regarding the chief functionary and office bearers. Okay, so यहाँ पे अगर आपको प्रायर परमिशन चाहिए तो रिमेंबर यू हैव टू मेक एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आएगा और अप्रूवल आने के बाद ही आप ले सकते हो. सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द स्टैट्यूट. Okay, they have to submit the specific commitment letter from the donor के KYC forms के साथ कि मुझे किससे पैसा मिल रहा है, and they have to specify the conditions कि ये पैसा किस पर्पस के लिए मिल रहा है, ना कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए. तो आप इंडिया के बाहर से फंड्स ले सकते हो. अच्छा, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन? चलो ये तो पता ही है. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन? नहीं, the registration, the association should be registered in the Society or Trust Act या फिर सेक्शन 8 कंपनी. याद आया, इधर मैं बोला था डॉन बॉस्को स्कूल, यू शुड बी अ ट्रस्ट और अ सोसाइटी और अ सेक्शन 8 कंपनी, एंड द एसोसिएशन शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years. They should have undertaken reasonable activity in the field of society for the foreign contribution. ये है डॉन बॉस्को स्कूल की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. इसमें से कोई एक होना चाहिए था. प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि एटलीस्ट 3 साल का एग्जिस्टेंस चाहिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो. व्हाट आर 2 modes of obtaining the permission to accept foreign contribution? चलिए तो बताओ. What are 2 modes of obtaining permission to accept foreign contribution? Perfect, बराबर है. 2 modes is registration and prior permission. So simple. और क्या था? वही था, पढ़ा हुआ है. मैंने बोला था 2 तरीकों से आप पैसा ले सकते हो, या तो रजिस्ट्रेशन कर लो या प्रायर परमिशन. और एग्जाम्पल भी दिया था, कभी कभी कॉलेज में आप जाते हो बिना आई कार्ड के तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और कभी कभी कॉलेज में आप आई कार्ड लेके जाते हो तो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, आप ऐसे ही जा सकते हो. Okay. Under what circumstances can the central government prohibit a person from dealing with the currency or security which is received in contravention? तो अगर किसी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन किया है तो व्हाट इज द प्रोहिबिशन? Yeah. Central government can prohibit a person from dealing in foreign currency
if it is satisfied that after making an inquiry that the person or such article in his custody, the prohibition can be made through written order and the person must comply with the order unless. याद है आपने सस्पेंशन पढ़ा था, वही पार्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑर्डर कब डालता है. सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑर्डर इसलिए डालता है दे कैन प्रोहिबिट द पर्सन फ्रॉम डीलिंग इन करेंसी और सिक्योरिटी इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट इफ इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी दैट द पर्सन ऑफ सच आर्टिकल और करेंसी इन दिस कंट्रोल इज बीन प्रोहिबिटेड एंड दे कैन मेक अ रिटन ऑर्डर इन दिस रिगार्ड. Okay, then describe the restrictions on acceptance of foreign hospitality. No member or legislature or office bearer or political party or judge, याद आया, or servant or entity owned or controlled by any entity while visiting a controlled by the government can accept foreign hospitality while visiting any country or territory outside India without permission. तो हम जिसकी बात करें वो ये है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. याद आया. Do individuals and organizations specified in 6 need to obtain prior permission to accept foreign hospitality? Section 6 is foreign hospitality, Sara. So do they have to obtain the prior permission? Well, the answer is no. Individuals and organizations do not need a prior permission. क्यों? क्योंकि जाते समय इटिनरी 2 हफ्ते के पहले ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि सर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं, मुझे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलने वाली है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए लेना है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं. अब आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, आपका दोस्त आपके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट करने वाला है आप कैसे बता सकते हो. बराबर. आपको फ्री रहना खाना पीना, मैं बोला था ना तू कनाडा आ जा, तेरा रहना खाना पीना सब फ्री कर देता हूं, आजा बस एक बार. तो ये मेरे को हॉस्पिटैलिटी तो मिल रही है. क्लियर. डू आई हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं, आई डोंट हैव टू टेक द परमिशन. और अगर मैं पॉलिटिकली कनेक्टेड हूं तो मुझे सिर्फ इंटीमेशन देना है 2 वीक्स प्रायर टू जर्नी. देख लेना, लिखा भी होगा आपने. और अगर मेडिकल इमरजेंसी आई थी, हाँ, तो उसमें परमिशन कहां लेनी है. क्लियर. हाउ आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन? छोड़ो वो तुम लोग को आएगा नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर कैलकुलेटिंग दैट. ओके, तो बेसिक जो खर्चे होते हैं ओके वो इंक्लूड होते हैं. अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का आते आया था. मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन का 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्चा नहीं हो सकता. याद है, लिमिट लिखी हुई है, देख लेना कि टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे 20% से ज्यादा नहीं हो सकता. तो वही पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहां से आते हैं, और हम भी सोच रहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहां पे लिखा है इसमें. So central government can prescribe the elements to be included in the administrative expenses and method of calculating that. Define speculative business in the context of foreign country. Well, speculative business refers to using foreign contribution or income arising from activities involving high financial risk. Okay, so foreign contribution cannot be used for investments in equity, derivative markets, gambling, okay, or any kind of speculative business. And what does section 9 empower? हाँ, ये तो powers of central government, section 9, ये तो मैं आता ही होगा. Yes. They prohibit certain individuals or organizations from accepting foreign contribution, require prior permission of accepting foreign hospitality, and mandate and reporting of foreign contribution received in there. So that's just it. Does describe the restriction on utilization of foreign contribution for administrative expenses. Describe the restriction on utilization of foreign contribution. So आप कितने परसेंटेज से ज्यादा नहीं यूज कर सकते? Exactly.
So foreign contribution must be used for the purpose for which they have been received and not for speculative business. Administrative expenses should not exceed 20% of the foreign contribution unless it is. That is a restriction. याद आया? Clear? What is the consequence of transferring foreign contribution to another person? चलो मिल गया, तुमने दूसरे को दे दिया, तो क्या? The person who is registered or granted, याद है डॉन बॉस्को से लेकर सेंट पीटर्स को दिया था, has obtained a prior permission under the act and received the foreign contribution cannot transfer to any other person. दे ही नहीं सकते. दे दिया तो क्या? दे ही नहीं सकते, देने का सवाल ही नहीं. दे दिया तो पेनल्टी आ जाएगी. ओके? पेनल्टी वैसे तुम लोग को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में छोटे में डाल दी है ताकि ब्रीफली अगर याद करनी चाहो तो याद कर सकते हो. ओके? तो नोट्स में डाल के रखा है सो दैट यू कैन लर्न इट फास्ट. वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं आपको मैं. ओके? Who requires prior approval of Ministry of Home Affairs before accepting foreign hospitality? Ministry of Home Affairs. क्या लगता है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? Exactly. Member of legislature, office bearer of political party, judges and government servants, and employees of the corporation which is owned by the government requires the approval of Ministry of Home Affairs before accepting foreign hospitality. Okay? What is considered as a foreign hospitality? What is considered as what? Exactly. So foreign hospitality refers to any offer, not being purely a casual one, which is made in cash or any kind of foreign source, for providing a person with a cost of travel to any foreign country territory which is free board, lodging, transport, medical treatment, सब कुछ. तो फ्री में रहने का दे रहा है, लेकिन हाँ कैश बेस नहीं होना चाहिए. They should not be giving you cash for that. So that is foreign hospitality. Okay, so these are the terms that we have understood in terms of foreign. Okay, can the prescribed authority manage the activities of a person whose certificate has been cancelled or surrendered? अब थोड़े different sides of questions, surrendered licensing list के ऊपर. So can the prescribed authority manage the activities of the person whose certificate has been cancelled or surrendered? Yes. Yes, if deemed necessary and in public interest, the authority can manage the activities directed by the central government. They can do that. Achha, how should the reporting be done in 17 subsection 2? How do you report? चलो ठीक है, वैसे भी तुम्हारा sections कमजोरी है. The reporting should be done in the prescribed form and the manner which is stated by the authority. Okay, तो कभी कुछ नहीं आएगा तो ऐसे लिख के आनेगा. The reporting has to be done in the prescribed form and the manner which is stated by the authority. तो आपने गलत भी नहीं लिखा है. Okay? Describe the restrictions on the funds in Foreign Contribution Act. Okay? ये concept था foreign contribution के restrictions के ऊपर. So no funds other than the foreign contribution can be received or deposited in the foreign contribution account. FCRA account खोलना पड़ेगा डॉन बॉस्को के नाम पे, वो बता रहा हूँ. So other than foreign contribution कोई और पैसा उस पे नहीं आना चाहिए. Only and only foreign contribution का funds. और वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे ही खर्चा होगा जिसके लिए आया है. हाँ, वो भी अलग है कि अगर आपको अलग अलग जगह से आ रहा है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए और किस जगह से ले रहे हो. ओके, देन what information should be reported in 72? ठीक है, ये पहले भी हो चुका है. That a specified branch of the bank or the authorized must report the prescribed amount of foreign remittance and the manner in which foreign remittance has been received. तो कहाँ से कितना पैसा कब कैसे मिला था वो सब रिपोर्ट करना पड़ेगा. इसलिए मैंने बोला था डॉन बॉस्को के केस में अगर वो सेंट पीटर्स को हेल्प कर रहा है तो सर बैंक को मैनेज करना पड़ेगा.
क्योंकि बैंक ही तो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। ये रहा वो सेक्शन 17(2). तो ये बैंक ही सब कुछ बताता है कि सर कितना पैसा आया, कब आया, किससे रेमिटेंस आया, किस पर्पस के लिए आया, और ये लोग ने खर्चा किस किस पर्पस के लिए लिया है हमसे। एंड what does 72 states? Well, ये बैंक के restrictions है. It states that the branch of the State Bank of India at New Delhi or the branch of scheduled bank where the person referred to has opened a foreign contribution account in the foreign state shall report the authority as may be. कि मेरा अकाउंट खुल गया है किधर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट किसी न किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ओपन करना बेटर होता है। अच्छा, कैन अ पर्सन ओपन अ मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? Yes. Yes, a person can open another FCRA account in the scheduled bank as of their choice as well as more than accounts of the scheduled bank for utilizing them. तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग पर्पस के लिए आप अलग अलग अकाउंट रख सकते हो, और रखना भी चाहिए, क्योंकि आपका एक अकाउंट में खर्चा उसी प्रोजेक्ट पे जा रहा है, वो नहीं तो कैलकुलेशन बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन एफसीआरए अकाउंट। छोड़ो सर, नहीं आता है। FCRA account is an account which is designated by the bank for the purpose of receiving a foreign contribution. It must be opened in a branch of State Bank of India or New Delhi as specified by the central government. Okay. What happens if the central government does not renew the certificate in 90 days? 90 days में उनको अप्रूवल देना होता है ना, तो if they do not give it, what happens? If they do not renew the certificate in 90 days? Well, the central government has to communicate the reasons for not renewing the certificate to the applicant. If they do not renew the certificates, they have to communicate the reasons for not renewing the certificate. Okay. Describe the process of renewing a certificate under Section 12. How do you renew a certificate? Simply make an application to the central government. 6 months or 4 months wala. Yes, perfect. The certificate may be renewed within 6 months before the expiry. The central government may conduct an inquiry to ensure all the conditions specified have been fulfilled. The application renewal must be made to the central government within the prescribed period. The central government will renew the certificate within 90 days and grant a certificate of renewal for a period of 5 years. Okay, perfect. 4 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन करनी थी। अगर आपने 6 महीना प्रायर में एप्लीकेशन नहीं की तो ड्यू के बाद 4 मंथ्स में एप्लीकेशन करनी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना 90 डेज ही ले रहा है पहले भी। ओके, व्हाट इज द अथॉरिटी रेफर्ड इन सेक्शन 15(1) रिस्पॉन्सिबल फॉर? जाने दो, 15(1) पता नहीं है, बट ये रहा, returning the foreign contribution and assets to the person if they are subsequently registered under this act. So they are responsible for returning the foreign contribution and assets to the person if they are subsequently registered. तो मैंने बोला भी था क्या कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया और आपने पैसा रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पैसा वापस जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो ये काम इनका है, दे विल रिटर्न द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ओके, तो पैसा वापस चले जाता है। एंड what can the prescribed authority do with the foreign contribution and assets? Simple. They can utilize the foreign contribution, dispose of the assets if they are not available for running the activity. They can utilize the foreign contribution, dispose the assets if adequate funds are not available for running the activity. Is that clear? What are the conditions for grant of registration and prior permission of FCRA? ये तो बताओ, ये तो पता है। What are the conditions for the grant of registration and prior permission? अरे एक पढ़ा है ना डॉन बॉस्को का पूरा एग्जाम्पल। ओके, याद नहीं, ठीक है चलो।
They include that a person not to be a fictitious person, not a benami person, and communal funds. So आप कोई भी funds, disharmony, guilty, diversion, multiple utilization, propaganda, citizen, violence, activity, contravention वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते. इस कंडीशन के बेसिस पे आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन मिलेगा. ठीक है, ये मॉड्यूल में लिखा हुआ होगा, सॉरी ध्यान आया, मॉड्यूल से लिया था कि कोई भी फिक्टिशियस बेनामी या फिर डिसहार्मनी, गिल्टी, प्रोपगेशन, सिडिशन, वायलेशन वगैरह के लिए फॉरेन फंडिंग का यूज नहीं कर सकते. ये वाले के टाइम पे हम जेएनयू का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि जेएनयू में जो झगड़े हो गए थे और उसके लिए तो वो सब के लिए फंडिंग करना मना है. ओके. अच्छा, who manages the foreign contribution and the assets of the person whose certificates has been cancelled and surrender? जिसका कैंसिल हुआ है, जिसका सरेंडर हुआ है, कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. फिनिश. What circumstances can a person surrender the certificate? If the person has not violated any provisions of the Act and management of the foreign contribution has been vested with the prescribed authority. सो व्हाट ही कैन सरेंडर. अगर आपको आपका सरेंडर करना है तो कब कर सकते हो? सिंपल. अगर आपने कोई एक्ट का वायलेशन नहीं किया है और आप अपना एसेट्स ठीक से मैनेज कर रहे थे तो आप खुद जाके सरेंडर कर सकते हो. अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे, सरेंडर करने की जरूरत ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैंसिल कर देगा. समझा ये डिफरेंस क्या था? एंड व्हाट हैपेंस इफ द सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड? सिंपल, ये भी पढ़ा था. इफ the person is not eligible for registration for 3 years, 3 साल का बैन लग जाता है. Okay. What are the grounds for cancellation of the certificate? Exactly. Making of false information, violating the terms, public interest violations, or lack of activity for 2 consecutive years, so you can cancel this. क्या? हाँ, रिन्यूअल नहीं करवाया, वो सब भी ग्राउंड्स आप लिख सकते हो. That also you can write, yes. Can a person whose certificate has been suspended still receive foreign contribution? Only on the prior approval. Yes, central government approves their application and specify the term they can receive. 25%, 75% नहीं, वो तो सस्पेंशन में लग रहा था. यहाँ पे लिखा हुआ है whose certificate has been suspended still, हाँ, you can use that 25% certificate. पर यहाँ पे 25%, 75% यूटिलाइजेशन पे था. पैसा अंदर आ रहा है, वो चलेगा, वो चलेगा. What happens to the person whose certificate is suspended? यहाँ पे आ जाएगा. He is not allowed to receive any foreign contribution during the suspension period. Okay? What are the provisions of suspension of certificate? ये 25%, 75% वाला. There is a central government may suspend the certificate for 180 days or a longer necessary if it is satisfied that there are grounds for considering the cancellation of the certificate. तो अगर पता चला कि गड़बड़ चल रही है तो they can suspend for 180 days. Under section 12A, what identification documents are required by the central government for prior permissions? आधार और ये सब. Yes. Perfect. They require Aadhaar official of the office bearers, copy of the passport of overseas citizens card, or in the case of foreigner, and as an identification document for prior permissions. बराबर. ये हम लोग ने डिस्कस भी किया था, आधार देने का, ऑफिस बेरर का डिटेल्स देने का, वो सब देने का. Then what are the potential impacts that acceptance of foreign contribution should not affect prejudicially? Well, the answer is simple this. The acceptance of foreign contribution should not affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific, economic interest of state, the public interest and freedom and fairness of election, friendly relationships of the state, and harmony has to be there. ये आइडिया रखते हुए आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो. अगर ये आइडिया नहीं है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में बहुत गड़बड़ आ जाएगी. ओके, ये मॉडल से लिया था. What are the ideas for foreign contribution? Okay, clear?
चलो, so now we are talking about ODI. Describe the types of Indian company entities eligible to make financial commitments to foreign entities. Perfect. So yes, the types of Indian entities eligible to make the financial commitments include companies as defined in the Companies Act, body corporates, incorporated under any law for the time being, LLPs, and a partnership firms. Perfect. Then, how can Indian entity participate in the construction and maintenance of submarine cable system? ये मॉड्यूल में था. चलो बता देता हूँ. Indian entity can participate in consortium with the other international operators as a co-ownership basis. ठीक है, चलो. अच्छा, describe the eligibility for remittances of ODI in strategic sectors. Eligibility for remittance of ODI in strategic sectors. नहीं मालूम. AD Bank may allow the remittances of ODI in strategic sector after ensuring the necessary permission from competent authority is obtained. So अगर आप लोगों ने परमिशन ऑब्टेन की है तो ही आप स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की तरफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. मैंने पहले भी बोला था स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स वेरी क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं, उनकी तरफ आसानी से पैसा भेजना अलाउड नहीं होता है. Then, is an NOC required if an Indian entity has already issued a guarantee before investigation or NPA classification? मतलब आपने ऑलरेडी गारंटी बाहर इंडिया के बाहर दे चुके थे, ऑलरेडी गारंटी इंडिया के बाहर दे चुके थे, और अब आपकी गारंटी दे चुके थे तो इन्वेस्टिगेशन अब कंपनी के खिलाफ शुरू हो गई, तो क्या एनओसी चाहिए रहेगी? द आंसर इज नो. एनओसी इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द रेमिटेंसेस ड्यू टू द इन्वोकेशन ऑफ द गारंटी इशू. बराबर, ये हमने डिस्कस भी किया था कि अगर गारंटी दे चुके थे तो पैसा भेजना अलाउड है. देन what is the requirement for a person resident in India with an NPA or willful defaulter status to make a financial commitment? ये तो मजेदार बात है. ढूंढो ढूंढो ढूंढो. Well, the answer is this. They need to obtain a no objection from the lender, bank, regulatory and investigation agency. What is the requirement of a person resident in India with an NPA or willful defaulter? अगर आप देखोगे तो मिलेगा, लिखा हुआ है. मिला? Okay, that is what the revision is. ढूंढना पड़ेगा. Okay. What is the financial commitment threshold that requires a prior approval from Reserve Bank? What is the financial commitment threshold कि मुझे RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा? 1 billion. Yes, the financial commitment threshold exceeding 1 billion or is exceeding in financial year requires a prior approval from Reserve Bank. अगर आप ओडीआई के लास्ट में पार्ट में देखोगे तो वहां पे लिखा भी हुआ है 1 बिलियन से ज्यादा भेजने के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए. याद आया? लिखा भी हुआ है आपने, 1 बिलियन से ज्यादा भेजने के लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए. What is the permission required for an Indian entity to participate in a consortium of submarine cables? Well, Indian entity has to obtain the necessary permission from competent authority. वो notes में था, model में था. Can ODI be made in unincorporated entities in strategic sectors? Can you make ODI in unincorporated entity who are in strategic sectors? Well, yes. ODI can be made in unincorporated entities in strategic sectors also. Okay? जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन. देखो, हमारे उधर एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन इंडिया के बाहर के रूल के लिए आई एम नॉट लायबल. अब उनकी कंट्री में अगर वो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी नहीं रखते और उनको भी वो स्ट्रेटेजिक काम देते तो मैं क्या करूं? So can I make a ODI in that company, in that area, in an unincorporated entity, but in the strategic sector? The answer is government ने बोला yes. क्योंकि उनकी कंट्री का अगर वो लॉ है, अब लेट्स सपोज ये लॉ मस्कट में ऐसा है कि आपको कोई कंपनी बनाने की जरूरत है, आप पार्टनरशिप फर्म बना के भी
बेसिक एक्सपोर्ट्स या वहां का काम कर सकते हो, तो वाई शुड आई इनकॉर्पोरेट एंटिटी, वहां पे पार्टनरशिप बना के भी ओडीआई कर सकते हो। गॉट इट? क्लियर? तो याद रखना, हम जिस लॉ की बात करें वो इंडिया के बाहर की लॉ की बात करें, इंडिया के नहीं। इंडिया में भी नीड अ इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। देन what is the restriction of limited liability structure for foreign entities in strategic sector? What is the restriction of limited liability structure for foreign entities in strategic sector? नहीं याद है? Well, the restriction in limited liability is not mandatory for entity with a core activity. अभी तो समझाया कि उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी हो, लिमिटेड ये हो, ऐसा कोई मैंडेटरी कंसेप्ट नहीं है। It is not mandatory for the entity with the core strategic sectors. अच्छा, what sectors are covered in the strategic sector? चलो ये तो बताओ। यस, ऑयल गैस ये सब बराबर है। तो ऑयल गैस कोल मरीन सबमरीन केबल्स एंड एनी अदर सेक्टर्स एज मे बी डिस्प्लेड, ये है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ओके, तो इंडिया के बाहर हमारे उधर तो इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन इंडिया के बाहर वो इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं, वो गवर्न है कि नहीं, वो उसकी कंट्री का लॉ है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं सिर्फ उसको फंड्स भेज सकता हूँ और वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ। Then, describe the process for obtaining the approval from the central government for overseas investments. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Describe the process for obtaining approval from the central government for overseas investments. Okay. So, application for overseas investment and financial commitment. Okay. In Pakistan or other this jurisdiction may be advised by the central government from time to time, or in the strategic sector specific geography shall be forwarded by the authorized dealer bank from their constituents to the reserve bank as per the provision laid down. तो याद रखना, पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, बाकी सब के लिए ऑथराइज डीलर बैंक से काम हो जाएगा। आपको ऑथराइज डीलर बैंक को जाके सबमिट करने का है ओडीआई फॉर्म्स, और ओडीआई फॉर्म्स आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे और अपने को अप्रूवल मिल सकता है। तो अगर आपकी कंपनी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स या पाकिस्तान या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में नहीं है तो काम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी सबमिटेड अलोंग विद द प्रपोजल ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स? यस, a background and brief details of the transaction, reasons for approval mentioning the FEMA provisions, observation of designated bank, recommendation of the AD bank, confirmation of the board resolution, diagrammatic representation of organizational structure, valuation certificate from the foreign entities has to be submitted. Okay, ये part आपने पढ़ा भी है, देखा भी है. Okay, very good. What is the procedure for making overseas investments? Well, the person intending to make an overseas investment shall fill up a Form FC, duly supported by the requisite documents to the authorized dealer for remitting funds outside India. बराबर, उसमें लिखा भी हुआ है एफसी फॉर्म भरना पड़ेगा. What is the definition of step down subsidiary and or a special purpose vehicle in the context of overseas? नहीं? So, पढ़ा है कि नहीं? Yes, वो इतना समझाया था. Step down subsidiary or a special purpose vehicle in the context refers to an entity through which the overseas investments may be made in a foreign entity which is engaged in bona fide business directly or indirectly. Okay, so आपकी होल्डिंग कंपनी की एसडीएस स्टेप डाउन सब्सिडरी, इसके थ्रू आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करते हो. ओके, फिर मैंने कई सारे एग्जांपल्स दे के समझाया था, डेट बेस्ड, इक्विटी बेस्ड कैसे चल रहा है. Describe the benefits of overseas investments by a person resident. बताओ benefits. What are the benefit? नहीं मालूम. कभी कभी आंसर बनाना पड़ जाता है. Overseas investment enhance the scale and scope of business operation of India's entrepreneur by providing a global opportunity. They offer easier access to technology, research, development, and a wider gold market, and cost of capital and competitive brand values. That's what overseas investment. बोला कभी कभी बनाना पड़ता है. Okay,
कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन से लिया था, तो वहीं से उठा के लिया है. What is the definition of subsidiary and step down subsidiary of a foreign entity now? Not Indian entity, foreign entity. Step down subsidiary of a foreign entity is an entity in which the foreign entity controls and the structure of such entity complies with the structural requirement of the foreign entity. मतलब फॉरेन एंटिटी की एसडीएस भी हम, सॉरी, फॉरेन एंटिटी की स्टेप डाउन सब्सिडरी को भी हम लोग फॉरेन एंटिटी ही ट्रीट करेंगे, प्रोवाइडेड फॉरेन एंटिटी का इस पे कंट्रोल हो. फिर कंट्रोल का डेफिनेशन हमने देखा. एग्जैक्टली सेम वे, वही बता रहा था, उसमें कौन सी बड़ी बात थी. है ना, लेकिन अच्छा कंफ्यूज होता है ना. Under what conditions can a person resident in India make or transfer investment or financial commitment outside India? Um, well, the answer is this. A person resident can make or transfer, okay, financial commitment outside India under the general permission automatic route, subject to the provisions of FEMA foreign exchange and subject to the provision of overseas regulations. बस इतना ही लिखने का. आपको ये रेगुलेशन कंप्लाई करने का और ऑटोमेटिक हो के परमिशन रूट में हो तो दोनों का परमिशन या ऑटोमेटिक रूट लेके भेज देगा. ओके. अच्छा, डिफाइन डेट इंस्ट्रूमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओवरसीज. व्हाट इज डेट इंस्ट्रूमेंट? Government bonds, government security. Yes. So, debt instrument in the context of overseas include government bonds, corporate bonds, all tranches of securitization structure that are not equity tranche borrowings from the firm's depository receipts. ये सब भी आप लोगों ने देखा हुआ होगा, नहीं देखा है तो देख लेना. अच्छा, what is overseas portfolio investments? Definition of OPI. सब लिखवा चुका हूं या नोट्स में ऑलरेडी है, सब डिटेल पार्ट हो चुका है. So overseas portfolio refers to the investments other than ODI in foreign securities, excluding unlisted debts or securities which is issued by person resident in India who is not in IFSC. जो ODI में नहीं है वो OPI में आएगा. हाँ, तो आ सकता है. तो इसमें आप लिख सकते हो कि इट इज अ इन्वेस्टमेंट अदर देन ODI इन फॉरेन सिक्योरिटी, बिकॉज OPI का मेन पर्पस फॉरेन सिक्योरिटी में पैसा ही डालना है. इसलिए बोला था म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, उनका काम OPI है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करना. ओके, बट नॉट इन IFSC सेगमेंट्स. Describe the condition for an Indian equity entity to lend or invest in debts instrument issued by a foreign entity. Simple. Indian entity can lend or invest in debt instruments for foreign entity that Indian entity is eligible to make an ODI. Indian entity has made ODI in the foreign entity and the Indian entity has acquired control in the foreign entity before the commencement of financial. तो वही इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर फंड्स भेज सकती है. समझा? Clear? What is the definition of financial commitment by a person resident in India? Okay. So what is the definition of financial commitment by person resident outside? Financial commitment by a person resident in India refers to aggregate amount of investments by way of ODI, debt other than OPI and non-fund based facilities. ओके, तो जो भी आप ODI करते हो या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज करते हो,
ओके वो सारे के सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में आ जाते हैं, बट नॉट ओपीआई, बिकॉज ओपीआई इज डिफरेंट थिंग। और अपने अच्छा ठीक है आगे आ ही भी रहा है वो भी बता दो। What are the need for Indian corporates to be a part of global value change? What why is there a need for Indian corporate to be the part of global value chain? हमें ओडीआई वगैरह क्यों करनी है, क्यों हम ग्लोबल वैल्यू के पार्ट होना चाहते हैं? इसके लिए to increase integrated global markets, being the part of the global value chain allows Indian corporate to access the global opportunities, enhance competitiveness, and promote ease of doing business. That is why we want to be the part of global. Okay, ये कुछ नहीं, ease of doing business and introduction के part से लिया था again. How do overseas investments by a person resident in India contribute to the foreign trade and technology transfer? ये भी देखा हुआ है. The overseas investments by PRI is important drivers for foreign trade and technology, which in turn boost the domestic employment, investments and growth and their interlinkages. ओके इन्हीं की वजह से हमारे उधर अब वो एसएमई सेगमेंट्स ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है. अच्छा डिफाइन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, चलो ओ आई. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स रेफर्स टू फाइनेंशियल कमिटमेंट इन ओवरसीज. याद है ओ आई बताया था, इसमें दो पार्ट आता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट एफसीज, ओके, और ओपीआई दोनों, उसका डेफिनेशन उतना ही है. ओके चलो इसका बता दो जो तुम बता रही थी. So control refers to the appointment of majority of the directors, control the management or the policy of the company. This control can be exercised by a person acting individually or in concert or through shareholding pattern, management rights or voting agreements subject to 10% of the voting right. ओके ये पूरा कंट्रोल का पार्ट भी समझ के हमने कंप्लीट किया है. अच्छा हाउ इज फॉरेन एंटिटी डिफाइंड इन ओडीआई? नहीं मालूम, ठीक है चलो. Foreign entity refers to an entity which is formed and registered incorporated outside India, including international financial center that has limited liability. That is a foreign entity. Okay. Define ODI. चलो इसका बता दो. 10% वाला जो तुम बोल रहे थे. Okay. So ये रहा. Overseas direct investment refer to acquisition of an unlisted equity capital or subscription as a part of memorandum of association of foreign entity in 10% or more of the paid up capital of the listed entity, or investments with control where the investment is less than 10% of the paid up capital of the listed entity. Okay, so that is what ODI is. आप इंडिया के बाहर कोई भी एक्विजिशन कर रहे हो अनलिस्टेड कैपिटल का या एमओए एओए का पार्ट बने हुए हो, या इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% और मोर इन द पेड अप कैपिटल ऑफ द लिस्टेड फॉरेन एंटिटी कर रहे हो, ओके, या यू आर एक्वायरिंग अ कंट्रोल इवन इफ योर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10%. So that's what was ODI. एमओए एओए का सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब आप इंडिया के बाहर, नहीं नहीं, दैट डिपेंड्स, इट्स वन ऑफ द मोड. आप चाहिए तो शेयर्स ले सकते हो, आप चाहिए तो उसके साथ फॉरेनर के साथ मिलके एक कंपनी बना सकते हो, कोई भी एक. तो आप फॉरेनर के साथ मिलके कंपनी बनाओगे और एमओए एओए साइन करोगे तो आपने एक तरह से इंडिया के बाहर कंस्ट्रक्ट कर लिया है ओडीआई. ओके क्योंकि आपको भी पैसा बेचना पड़ेगा फिर. What is the purpose of foreign exchange management overseas investment rules? चलो पर्पस देख लेते. The purpose of these rules is to simplify the procedures, rationalize the rules and regulations of FEMA in order to promote the ease of doing business and global value chain. ये था मेन पर्पस जिसके वजह से ये रूल्स बनाए गए थे. ओके फाइन. So these were some of the purpose and importance of OP. In other set of questions that we have to see is, what are the requirements for certifying a diminution in value of outstanding dues towards Indian entity or investors for restructuring? OPI में आप restructuring वाला part पढ़ते हो,
ये मैंने आपको बोला था नोट से देखने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग पूरा याद है, रीस्ट्रक्चरिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, देखो नोट्स में लिखा भी हुआ है पूरा। डिमिनिशन इन वैल्यू ज्यूरिसडिक्शन कहां से आया? नहीं, नोट्स में है पूरा। डिमिनिशन में बोला था जब वैल्यू गिर जाती है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल आप ले सकते हो, मैं वो समझा रहा था, वो वाला पार्ट। ओके, सो डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ एन इंडियन एंटिटी, तो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने इंडिया के बाहर पैसा भेजा है, लेकिन क्या हुआ कि ओवरसीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ और वैल्यू गिर गई है। अब वैल्यू अगर गिर गई है तो आपको बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर करनी पड़ती है। द एसेट्स ऑफ लॉस्ट द वैल्यू। अब इक्विटी में इतना बड़ा कैपिटल रख के इतना सा एसेट्स तो होगा नहीं, तो एज अ रिजल्ट मुझे उसको रीवैल्यू करना पड़ता है या रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो उसके लिए, क्योंकि पैसा इंडिया के बाहर है और आपका पैसा अब आप कम कर रहे हो, तो आरबीआई को डर लगने लगता है, फिर तो ये पैसा ही नहीं आएगा वापस। So as a result, if there is a diminution in value, it has to be certified on the arm's length basis as per a registered value of Companies Act, or a corresponding value registered with the regulatory authority or certified public accountant in the host country. तो या तो उस कंट्री का कोई अकाउंटेंट या फिर आपके खुद की कंट्री का रजिस्टर्ड वैल्यू सर्टिफाई करे कि हाँ ये वैल्यू डिप्लीट हो गई है भाई, सॉरी यहाँ पे सिचुएशन में प्रॉब्लम हो गई तो डिप्लीट हो गई। एंड इफ द कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10 मिलियन यूएस डॉलर और इफ द डिमिनिशन एक्सीड्स 20%, देन दिस सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट। ये लिखा भी हुआ है नोट्स में, देखना। हाँ, पर नोट्स में भी है ये, समझा? तो जहां पे भी वैल्यू इंडिया के बाहर गिर जाती है, इसको रिडक्शन इन कैपिटल का चैप्टर अगर आपने याद होगा तो वो पढ़ा है, वो यही है, where the value of the assets deplete or the share value deplete, then it's a diminution in capital. फिर reduction of capital company law में आप एक aspect पढ़ते हो, what is the difference between a diminution and a reduction of capital, वो difference भी आता है। okay? अच्छा, what is included and excluded while calculating total financial commitment for ODI, ये मालूम है? अगेन उसी पार्ट में ही है। सो जब आप टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट करते हो, shall not include capitalization of retained earnings for reckoning such limit, but shall include the utilization of amounts raised by issue of ADR and GDR or stock swaps, as well as the utilization of external commercial borrowings to the extent of creation of pledge or charge and has not already been reckoned towards the above limits. तो फाइनेंशियल कमिटमेंट जो इंडिया के बाहर है, okay, what shall be included or not? It will not include any retained earnings, that is बोनस इश्यू करना, ये सब इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिटर्न अर्निंग्स में क्या हुआ है, अपने प्रॉफिट्स को उठा के बोनस में डाल दिया, तो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि फंड्स इंडिया के बाहर गया ही नहीं। बट इट विल इंक्लूड एनी काइंड ऑफ अमाउंट जो आप इंडिया के बाहर एडीआर जीडीआर इशू करके रेस करते हो, एनी काइंड ऑफ स्टॉक स्वैप्स, मैंने ये भी बताया था, तेरी कंपनी के शेयर्स मेरे, मेरे कंपनी के शेयर्स तेरे, चलो एग्री करते परसेंटेज पे, तो वो भी इंक्लूड होगा। या इंडिया के बाहर ईसीबी रेस करके आपने उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो भी आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट में इंक्लूड होता है। ठीक है? Now, what are the limits for total financial commitment of an Indian entity in the foreign entities through ODI? So इसमें ये था कि total financial commitment made by Indian entity to the foreign entity shall not exceed 400% of the net worth as on the last date of the balance sheet. याद आया? ये करवाया था कि total 400% का मतलब 4 times होता है, क्योंकि 400 डिवाइड बाय 100 हो गया वो, तो 0 कैंसिल हो गया, ये 4 times हो गया। ओके तो आप अगर इंडिया में, मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि 100 करोड़ की कंपनी हो, तो बिना आरबीआई अप्रूवल के 400 करोड़ रुपया आप इंडिया के बाहर बेच सकते हो। दैट इज अ फाइनेंशियल कमिटमेंट दैट यू कैन मीट, प्रोवाइडेड आप किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं बेच रहे। ओके देन what types of insurance can the Indian entity not engage in the insurance segment invest in ODI? What types of insurance can the Indian entity
नॉट एंगेज इन इंश्योरेंस सेगमेंट इन्वेस्ट थ्रू ओडीआई। तो मैं इंडियन एंटिटी हूं, मैं इंश्योरेंस सेगमेंट में नहीं हूं, पर मुझे इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो ये रहा। इंडियन एंटिटी विच इज नॉट एंगेज इन इंश्योरेंस सेगमेंट कैन इन्वेस्ट इन जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, वेयर सच इंश्योरेंस इज सपोर्टिंग द कोर एक्टिविटी। क्योंकि इंडिया के बाहर मेरे जितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, वहां पे मेरा जो फर्नीचर ऑफिस है उसको जनरल इंश्योरेंस और एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं, उसके लिए प्रीमियम यहां से भेज सकता हूं। क्लियर? देन describe the conditions under which an Indian entity can make overseas investments in a foreign entity. Okay, so ये भी हमने पढ़ा है कि Indian entity which is not engaged in financial service sector can make an ODI in foreign entity directly or indirectly in a financial service activity except banking, insurance, subject to the condition they have posted a net profit in the preceding 3 financial years. ये सेम डिटो लाइंस आप लोगों ने पढ़ी हुई कि दे शुड हैव प्रॉफिट्स, तो ही, अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो ही आप इंडिया के बाहर फंड्स भेज सकते हो, अदरवाइज नॉट। क्लियर? डिस्क्राइब द मैनर इन विच इंडियन एंटिटी कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। तो याद होगा, ये भी मैनर भी आप पढ़ चुके हो। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड थ्रू सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ इक्विटी कैपिटल, or acquisition or bidding or tender procedure, or rights issue or allotment of bonus shares, or swap of security, or through merger, demerger, amalgamation or scheme of that. So उस manner में आप overseas investments कर। Then how does the allotment of yuan differ from approval from the Reserve Bank for investment in foreign entity? How does allotment of yuan differ from approval? What do you mean by yuan and what do you mean by approval? Those two are different from RBI. Well, different is allotment of yuan only signifies recording of investments for maintaining a database, while approval from RBI is a separate process. अप्रूवल का मतलब आपको हमने एक सर्टिफिकेट दे दिया, आपके ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दिया। यूआईएन का मतलब है कि आरबीआई ने अपने डेटाबेस में आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है। यूआईएन का अप्रूवल मतलब ये नहीं कि आपको अप्रूवल मिल गया है। तो दोस टू आर डिफरेंट थिंग्स। डिफाइन यूआईएन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओडीआई। व्हाट इज यूआईएन? Perfect. It's a unique identification number obtained from authorized dealer for facilitating the remittance to the foreign entity. It's a unique identification number obtained from authorized dealer for facilitating remittance towards the foreign entity. Okay. What is the purpose of submitting Form FC and obtaining UIN in the context of ODI? Well, Form FC and requisite documents must be submitted to OED Bank to obtain the UIN for making ODI. Okay, Form FC and requisite documents must be submitted to AD Bank to obtain the UIN for making the ODI. Because बिना UIN के ODI करना मुश्किल है। ठीक है? Then describe the obligations of a person resident in India acquiring equity capital in foreign entity. Describe the obligations of a person resident in India acquiring equity capital in a foreign entity. So in case अगर आप इंडिया के बाद शेयर्स खरीद रहे हो, the person has to submit the evidence of investment within 6 months and repatriate the funds if the evidence is not submitted. You have to give the evidence of investment within 6 months, otherwise वो funds वापस लाना पड़ेगा in India. Got it? Then describe the method through which person resident in India can make overseas investments. Simple, regulations के हिसाब से. So the method of remittances are banking channels, using funds held in accounts which is maintained in accordance with the Foreign Exchange Management Act, or by swap of securities, or using proceeds of ADR, GDR, or by ECBs. ये ऊपर जो पढ़ा था वैसा ही है. Okay, so these are the methods through which you can send the funds. ये आपको notes में भी सब details outs मिलता है. Okay. Describe the condition for permitting restructuring of the balance sheet of foreign entity by the person resident in India. Okay. So what is the condition for restructuring of the balance sheet of the person in India? Well, the condition is this. The person resident in India may permit the restructuring of the balance sheet that has been incurring losses for the previous 2 years, subject to compliance of reporting and documentation requirement, and the restructuring should not result in total value of outstanding dues towards a PRI exceeding the proportionate amount of accumulated losses.
ओके तो रीस्ट्रक्चरिंग में मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब आप बैलेंस शीट का रीस्ट्रक्चर कर रहे हो और यहां पे आपको लॉसेस दिख रहा है, 10 करोड़ रुपए का लॉसेस है, 10 CR का लॉसेस, ओके सो 10 CR का लॉसेस है। इन दैट केस अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हो और यहां पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल को सुटेबली एडजस्ट करते हो, तो दैट एडजस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। Okay, so that is the outstanding dues which you are adjusting should not exceed the proportionate or the accumulated amount of losses. Okay, so restructuring क्या है? They may permit a restructuring of the balance sheet which has incurred losses in the previous 2 years, subject to compliance of reporting and documentation. And the restructuring should not result in total value of outstanding dues towards the person resident in India, यानी जो पैसा मुझे इंडिया में मिलने वाला था, ओके, exceeding the proportionate of accumulate. तो मेरा कैपिटल के सामने मैं उतना ही एडजस्ट कर सकता हूं जितना लॉसेस का एक्चुअल हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। ओके क्लियर? डू एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स नीड टू बी रिपैट्रिएटेड बिफोर डिसइन्वेस्टमेंट्स? जो एक्सपोर्ट्स का पैसा मिलने वाला है, वो जो कंपनी इंडिया के बाहर थी उसमें से आप शेयर सारे बेचने वाले हो, तो जो भी एक्सपोर्ट्स का पैसा मिलने वाला है वो रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। द आंसर इज नो। Export receivables or dues that do not arise on account of investment in equity do not need. हाँ, अगर आपका ये एक्सपोर्ट्स का पैसा इक्विटी की वजह से आने वाला है तो रिपैट्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट स्टैंड्स ऑन अ सेपरेट फुटिंग एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स ऑन अ सेपरेट। एक्सपोर्ट्स आता है पीएनएल अकाउंट में, इक्विटी बैलेंस शीट में। तो एक्सपोर्ट्स में मिलने वाला पैसा अलग से आएगा और इक्विटी का पैसा अलग से आएगा। ओके, अनलेस आपका इक्विटी एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हो। ठीक है। What is the requirement for approval in case of transfer of equity capital on account of merger, amalgamation, demergers? Well, the transfer or liquidation on account of merger, amalgamation, demergers requires the approval of the competent authority as per applicable law. So that has to be यहाँ पे इंडिया या इंडिया के बाहर की होस्ट कंट्री में अप्रूवल्स लेके आप मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर्स कंप्लीट कर सकते हो और फॉरेन सिक्योरिटी का सूटेबली ट्रांसफर हो सकता है। तो हो सकता है आपने इसकी कंपनी में पैसा लगाया था, ये इंडिया के बाहर का है, अब इसकी कंपनी मर्ज हो गई तो आपको दूसरे की कंपनी का पैसा मिल रहा है, शेयर्स मिल रहा है। Describe the eligibility criteria for a person resident in India to transfer the security. Well, he may transfer the security by way of sale to a person resident in India who is eligible to make the investment as per the rules. So what is the condition for person resident in India to transfer? So he can sell the security. He can sell the securities. And how can a PRI transfer equity investment as per OI rules? Simple है, अगर आपको ट्रांसफर ही करना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, so subject to the limits, subject to the conditions and pricing guidelines, subject to reporting requirements and OI rules के हिसाब से आप बेच सकते हो। तो subject to the limit conditions, you can transfer the security outside India also. Define the pricing guidelines for overseas related investments. What are the pricing guidelines? याद है? The AD bank facilitating the transfer has to ensure that the compliance of the provision of OI rules is there, and the bank's board approve the policy should consider internationally accepted pricing methodology. Okay, so you have to see pricing methodology which is widely accepted, यानी उनकी कंट्री में क्या चल रहा है, because after all pricing हमारा पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है, अदरवाइज हमने स्टडी किया है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा के लो। ठीक है। And explain the purpose for which an Indian entity can make a remittance to the office or branch outside India. Well, Indian entity can make a remittance to the office and branch outside India for the normal business operations only, not otherwise. For normal business operations only, not otherwise. Okay? Achha, what are the restrictions on overseas investment by cash? Can you invest cash outside India? No. Overseas investment by cash is not permitted. Okay, fine. So overseas investments by cash is not. So other questions on overseas investments. What are the restrictions on outward remittance by person resident in India towards foreign entity? What are the restrictions for outward remittance by person resident in India towards foreign entity? Well, simple tha. Authorized dealer bank
shall not facilitate any outward remittance or any further financial commitment until a delay in reporting is recognized. मैं हमने ये पढ़ा भी था कि जब तक तुम रिपोर्टिंग ठीक नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं देने दूंगा. Okay? Can a person hold a transfer of investments in immovable property if the initial investment is not permitted in FEMA? No. No holding or transfer of investments in immovable property is not permitted if the initial investment is not permitted in FEMA. क्योंकि अगर FEMA ने रोका है तो आप फिर आगे शेयर्स का ट्रांसफर वगैरह भी नहीं कर सकते. What are the options available to a person resident in India who has acquired immovable property outside India as per FEMA or foreign exchange rules? Okay, so the person resident in India who has acquired property outside India can transfer the property by way of gift or sale. Who is eligible to acquire the property, create a charge, and as per the rules and regulations. याद है acquisition of property का पूरा पार्ट लिखवाया भी हुआ था. Then describe the conditions under which an Indian entity with an overseas office can acquire immovable property. An Indian entity with an overseas office can acquire immovable property outside India. Well, the answer is an Indian entity with an overseas office can acquire outside India for the purpose of business and residential of the staff. For the purpose of business and residential of the staff. याद रखना है इस चीज को. What are the ways in which a person resident in India can acquire immovable property outside India from a person resident outside India? Well, there are many ways. The PRI can acquire immovable property from a person resident outside India through inheritance, through purchase out of foreign exchange RFC account, through purchase out of remittance under the liberalized remittance scheme, jointly with the relatives, or from the income which you have got it outside India. ये पूरा पार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं. बराबर. How can a person resident in India acquire immovable property outside India? Simple है. They can acquire immovable property through inheritance, gift, purchase of a resident who has acquired the property in the foreign exchange. That's it. Describe the conditions under which a person resident in India can acquire immovable property on or before 8th of July 1947. अब ये immovable property. So इसके लिए क्या था? The person can acquire immovable property before 8 July if they continue to hold it with the permission of RBI. Okay. What type of immovable property is excluded from the restriction on acquisition or transfer of outside India? Well, does not apply to an immovable property which is held by a resident in India who is a national of a foreign state. तो यहाँ पे जो फॉरेन एम्बेसी में या फॉरेनर आके रहते हैं और उन्होंने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर एक्वायर की है तो आरबीआई बोलता है वी विल नॉट गवर्न देम क्योंकि वो है ही फॉरेनर. Okay, so does not apply to an immovable property which is held by a person resident in India but who is a national of a foreign state. So वो PRI है लेकिन PRI वो 182 days रहने से हो गया है. Okay, otherwise he is a foreign national as such. अच्छा, what is the restriction on acquisition and transfer of property outside India by person resident in India? Yes. They shall not acquire or transfer immovable property situated outside India without general and special permission of RBI. बिना RBI के permission के आप acquire नहीं कर सकते. Okay. Which classes of companies are exempted from the restriction of having more than 2 layers of subsidiaries? Okay. The exemption applies to banking companies, non-banking companies registered with RBI or insurance and government companies. बराबर उसमें लिखा भी हुआ है नोट्स में से. Then, which restrictions on making a financial commitment in a foreign entity has been invested or invest into India? What is the restriction of making a financial commitment in a foreign entity that has invested or invested into India? Okay, so no person resident in India shall make a financial commitment resulting in a structure with more than 2 layers of subsidiaries. Perfect. Then, how do ODI in startup recognize under the laws of the host country? Simple. ODI should be made by an Indian entity only from the internal accruals from where the Indian entity or group of associate companies
in India and resident individual own the funds. So in simple words, आपको आपके खुद की कंपनी से पैसा भेजना चाहिए तो जाके उसको ODI norms में recognize किया जाएगा. ठीक है? What is the meaning of expression real estate activity? Perfect. So buying and selling of real estate property or a transfer of development rights, excluding the development rights of township construction, residential or commercial premises or bridges or leasing. उसको छोड़ के. Perfect. Describe the restriction on making ODI in foreign entity engage in real estate activity. Restriction क्या था? नहीं याद. No resident in India shall make an engage in a real estate without the specific approval of RBI. Perfect. Describe the condition for making ODI by a trust or society. Yes, the foreign entity must be engaged in the same sector as trust is there. The trust should have been in existence for at least 3 financial years. The trust deed or memorandum or bylaws must permit the ODI. The investments must have been with the approval of the trustees and the special license or permission has been acquired for this purpose. Okay. What restriction is imposed on a person resident in India who has made a financial commitment in a foreign entity and has delay in reporting? Simple. The PRI shall not make any further financial commitment or transfer until the delay in reporting is regularized. बराबर delay in reporting था ना. तो जब तक delay regularize नहीं होगा आगे से और कोई पैसा नहीं जाएगा. What are the consequences of delay in filing and submitting requisite forms and returns? Well, उसका आंसर यही था. In case delay, the person resident in India may file and submit requisite forms and returns as per the late submission fees to the designated. तो आप late submission fees के साथ file कर सकते हो. बराबर. Who can certify the annual performance reports? So it can be certified where the statutory auditor is not applicable. Okay, then a chartered accountant can certify, including in case of a resident individual. It is also clarified that where the APR is required to be filed jointly by one investor or by other investor of filing APR, such person may be jointly filing the APR. So chartered accountant can certify and उसके filing आप jointly भी कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो. Okay. अच्छा, what is the requirement of reporting acquisition of foreign securities through conversion of Indian IDRs? अगर मैं IDR को so the acquisition of conversion of IDR must be duly reported as ODI or OPI as applicable. ठीक है? Who is responsible for reporting OPI by way of acquisition of shares or interest under the employee stock ownership plan or employee stock benefit schemes? Under this employee stock ownership plan. So the reporting shall be done by the office in India or the branch office or subsidiary or overseas entity in which the overseas entity has direct or indirect interest, okay, including the individual director. So reporting काम किसको करना है? They have to be reporting the Indian office or the branch office जिसने employee stock ownership plan या इसके अंदर ESOPs वगैरह में जो shares issue किए हैं उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ना कि इंडिया के बाहर की एंटिटी को, इंडियन एंटिटी को. अच्छा, what must a person resident in India report in OPI or transfer of OPI by way of sale? So they have to report the investment or transfer within 60 days from the end of the financial year or transfer is made in the month as September or March end. बराबर. What are the reporting obligations for the person in India who has made or making the financial commitment under taking investments in a foreign entity? Well, the person resident must report the financial commitment by sending outward remittances and must report the disinvestment within 30 days of receiving them. Restructuring must be reported within 30 days of receiving. Okay. Then describe the reporting requirements of overseas investments by a person resident in India. Simple वही था. All reporting with respect to overseas investments shall be made through authorized dealer bank in the prescribed form and manner. What is the eligibility for a resident individuals to make a ODI in foreign entity in IFSC? Perfect. Very good. The resident individual shall make foreign entity in
engage in financial service activity except banking insurance in a AFSC if such entity does not have a subsidiary or step down subsidiary outside IFSC where the resident individual has control. तो याद है मैंने एक बिल्डिंग बना के दिखाया था, इसके अंदर IFSC इधर SDS नहीं होना चाहिए. If you can see the notes उसमें है. Then can Indian entity not engage in financial service activity make an ODI in foreign entity in the financial service activity? The answer is yes. Indian entity not engage in this can make an ODI in the financial service activity except banking insurance if it does not meet the net profit requirements. Okay, बस ये restriction था. So they can make, yes, which is not engage in financial activity can make a ODI in financial services, yes. In IFSC, yes. Now what happens if the financial service regulator does not decide the approval of ODI made in IFSC within 45 days? Deemed approval. So if it does not decide, then it is in 45 days it is deemed to be an approval. What is the eligibility for making overseas investment in IFSC by person resident in India? Who is eligible? Simple. A person resident can make overseas investment in an IFSC subject to the provisions of FEMA management rules and FEMA overseas investment regulation. Okay, fine. So with this, it is ODI is also over and FCR is also over. Okay.